की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रमोशन अवसर पर जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल। अरे क्या हुआ? I would like to request you all, please keep your mobile phones on silent mode because in another few minutes we are going to start
this workshop come orientation program as soon as we are going to be joined by Honorable MOS. So I would like to request you all, kindly keep your mobile phones on silent mode. कृपा करके अपने मोबाइल फोन्स को आप साइलेंट मोड पर रखिएगा। अब से कुछ ही देर में माननीय राज्य मंत्री महोदय हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनके आगमन के साथ ही आज का ये कार्यक्रम विधिवत आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पर रखिए। धन्यवाद। अरे क्या हुआ? किन ख्यालों में डूबी हो रिकू? अरे पीको, तुम सोच रही थी बारिश का मौसम आने वाला है और उसके आते ही मुसीबतें ही मुसीबतें। अरे मॉनसून आते हैं तो खुशियां आती हैं और तुम कह रही हो मुसीबतें ही मुसीबतें। बोलो तो, जगह जगह पानी कब जमा होता है? मॉनसून में। ट्रैफिक जैम कब होता है? मॉनसून में। घरों के आगे गले गले तक पानी कब भर जाता है? मॉनसून में। तो बोलो, अब मॉनसून को मुसीबत ना बोलूं तो क्या बोलूं? पर रिकू, कभी सोचा है कि पानी का जो घर है वो वहाँ न जाकर तुम्हारे गली मोहल्लों या सड़कों पर क्यों आ जाता है? पानी का घर? समझी नहीं। अरे पानी का घर यानी बावड़ियां, तालाब, कुएं जो आज शहरों में लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अरे शहरों में कहाँ होते हैं तालाब, बावड़ियां, कुएं? अरे होते हैं रिकू, पर सब इन बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कहीं दब के रह गए और जो बचे खुचे हैं वो गंदे हो गए। पेड़ और जंगल भी खत्म हो गए जो बारिश का पानी और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। सो सैड। पर अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला, जब बारिश आए तो उसके पानी को छत या किसी टैंक में स्टोर करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ इन टैंकों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और धरती के अंदर भी जा रहा है। देखो इस तरह से। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा? दूसरा, जो तालाब, बावड़ियां और कुएं बचे हुए हैं उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाएं। और पेड़ लगाएं और ये मंत्र कभी ना भूलें। हाँ, सभी को बताएं भी, अपनाएं भी। Catch the rain where it falls when it falls. Catch the rain where it falls when it falls. लगता है आज बरखा रानी बहुत जम के बरसने वाली है। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा नाना 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 झूम के बरसो। वाह बाबा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। बरखा जो आने वाली है पीकू। हाँ वो तो ठीक है बाबा, पर सोचा है कि बरखा रानी आएंगी तो विराजेंगी कहाँ? ये क्या सवाल हुआ पीकू? और क्या, बारिश का पानी जमा होगा खेतों में, हमारी गलियों में, और कहाँ? हाँ बच्चों, यही तो परेशानी है। है? हाँ भाई, एक वक्त था जब बारिश के पानी से बावड़ियों, कुओं, तालाबों में पानी भरा रहता था। सिर्फ 4 महीने की बारिश से 12 महीने पानी का सुख मिलता था। वो कैसे? वो ऐसे छोटी कि बारिश का पानी धरती में जाकर कुओं, तालाबों और बावड़ियों में पानी का स्तर बनाए रखता है। यानी बारिश के पानी से भूजल रिचार्ज हो जाता है। हाँ, अच्छा बताओ तो, ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? भूजल से। और भूमि में जल कहाँ से आता है? बारिश से। बिल्कुल सही बोला छोटी।
पर अब तो पीकू बावड़ियों, कुओं, तालाबों पर सिर्फ कूड़ा कचरा ही दिखाई देता है। अरे रोती क्यों हो छोटी, कोई जुगत करते हैं। आइडिया, सब मिलकर बावड़ियों, कुओं और तालाबों को साफ करें। हाँ, जिससे बारिश का पानी हमारे सूखे पड़े कुएं, तालाबों, बावड़ियों और अन्य पानी के स्रोतों को फिर से पानी से भर दें। तो याद रखें, Catch the rain where it falls, when it falls. Catch the rain where it falls, when it falls. पीकू, आज संडे है, शहर घूमने चलें? चलो पीहू, आज चलते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी? मुझे तो शहर घूमना है, मुझे नहीं जाना इस पुरानी जगह। अरे पीहू, चांद बावड़ी एक जादुई जगह है, तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ घूमना। जादुई जगह? वो कैसे? चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान की शुष्क जलवायु का सामना करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक ऐसा कुआं बनवाया जो सालों तक जल की आपूर्ति कर सके। भूजल, मिट्टी और क्षारक्षरी चट्टानों द्वारा इस कुएं में पानी की आपूर्ति होती है। बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं, जो नीचे की ओर कुएं में जल के स्तर से नीचे तक जाती हैं। इन सीढ़ियों के कारण पानी का स्तर चाहे जो भी हो, उसे आसानी से भरा जा सकता है। चांद बावड़ी में जमा किया गया पानी वर्षों तक यहाँ के स्थानीय लोगों के उपयोग में आता है। चलो चलते हैं पीकू, और मैं अपने सभी दोस्तों को चांद बावड़ी चलने के लिए कहूँगी। वाह वाह, बहुत सही, ये हुई ना बात। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया।
जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रमोशन अवसर पर जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल। अरे क्या हुआ? किन ख्यालों में डूबी हो रिकू? अरे पीकू, तुम सोच रही थी बारिश का मौसम आने वाला है और उसके आते ही मुसीबतें ही मुसीबतें। अरे मॉनसून आते हैं तो खुशियां आती हैं और तुम कह रही हो मुसीबतें ही मुसीबतें। बोलो तो, जगह जगह पानी कब जमा होता है? मॉनसून में। ट्रैफिक जैम कब होता है? मॉनसून में। घरों के आगे गले गले तक पानी कब भर जाता है? मॉनसून में। तो बोलो, अब मॉनसून को मुसीबत ना बोलूं तो क्या बोलूं? पर रिकू, कभी सोचा है कि पानी का जो घर है वो वहाँ ना जाकर तुम्हारे गली मोहल्लों या सड़कों पर क्यों आ जाता है? पानी का घर? समझी नहीं। अरे पानी का घर यानी बावड़ियां, तालाब, कुएं जो आज शहरों में लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अरे शहरों में कहाँ होते हैं तालाब, बावड़ियां, कुएं? अरे होते हैं रिकू, पर सब इन बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कहीं दब के रह गए और जो बचे खुचे हैं वो गंदे हो गए। पेड़ और जंगल भी खत्म हो गए। जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की ये वर्कशॉप कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम
इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत। May we please have a round of applause, a kind of welcome claps for Shri Tudu. We can start. Manshi will join. I would like to inform all of you कि अब से कुछ ही देर में माननीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट टिल दैट टाइम वी आर गोइंग टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिल्पा भावना आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती देबाश्री मुखर्जी मैडम को एंड अर्चना वर्मा मैडम। I think Archana madam is going to join us soon. Welcome, ma'am. विकासशील सर से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप यहाँ मंच पर पधारें। आप सभी की तालियों के साथ एक बार अभिनंदन हो जाए हमारे गणमान्यों का। थैंक यू सो मच सर। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमेशा से जल को जो है वो ईश्वर स्वरूप कहा गया है और हम सभी लोगों ने इस बात को ये माना है कि जब जल ईश्वर स्वरूप है तो जिस प्रकार ईश्वर पर सभी का आधिपत्य होता है उसी प्रकार जल पर भी सभी का आधिपत्य होता है। लेकिन जब बात की जाती है अथॉरिटी की, किसी चीज की जब हम अथॉरिटी लेते हैं तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू शेयर विद यू ऑल, आप सभी लोग इस बात को जानते भी हैं और मैं कहना चाहूंगी आई एम सो प्राउड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल जो कि खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं फॉर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। क्योंकि हमारा ये जो अभियान है, इसकी जो हमारी थीम है इस बार की, वो है पीने के पानी के सतत स्रोत। तो पीने के पानी के सतत स्रोत को कैसे विकसित किया जाएगा, कैसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को कैसे इससे जोड़ा जाएगा, इन सभी चीजों का जो कार्यभार है वो आप सभी सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स पे है। एंड फॉर दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वर्कशॉप कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। सो टू इनिशिएट विद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल एमओएस श्री विश्वेश्वर टुडू जी कि आप कृपा करके ये जल कलश की जो हमारी परंपरा है इसके साथ आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए प्लीज। मंच आसीन सभी गणमान्यों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस शुभ काज में अपने कर कमलों का सहयोग दें। Miss Archana Verma also joining us on the stage. Most welcome. ये मुहावरा तो हम सभी लोगों ने सुना है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो हमें अपनी गगरी को आधा अधूरा नहीं रखना है, उसे संपूर्ण करना है ताकि ये जो ज्ञान की गंगा जिसे बांटने के लिए एक दूसरे के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं उसे समृद्ध हम सभी लोग कर सकें। ये जल कलश की परंपरा राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा ये जो शुरू की गई है, ये हम सभी लोगों को एक सूत्र के साथ बांधती है कि जिस प्रकार पानी में लाठी मारने से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। धन्यवाद महोदय। I would like to extend my heartiest thanks to Shri Vishweshwar Tudu ji and the dignitaries on the dais for such an occasion. And now to start with, firstly, I would like to invite on for the welcome and opening address Ms. Vinny Mahajan, Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Government of India. Please put your hands together for her.
Thank you. Honorable Minister of State for Water Resources, Tudu Saab, my colleagues and friends on the dais and off the dais. It's a pleasure meeting you again. It's always a greater pleasure meeting in person than on VC. We did have the privilege of receiving your time and attention during a VC meeting some days ago. I hope since then you've had the opportunity to take forward some of the discussion, some of the action on the discussion. Just to recap and repeat, sorry for those who already know this so well, but just to repeat, while Catch the Rain and the Jal Shakti Abhiyan are features for the past several years, and you know, and you will again be reminded on the various efforts around JSA. This year's theme is specifically sustainability of drinking water sources. And you also remember that the country has set itself an ambitious target of reaching piped water supply through a functional household tap connection to every rural household in the country. And you also know that by now, while the coverage has crossed 61% already, and hopefully next week we will have crossed 12 crore households. There is a lot of work. Yeah, it's awesome. It's so much work has happened so quickly. But there's a lot of work going on ground everywhere in the country. And while the minimum standard laid down in the Jal Jeevan Mission is 55 liters per capita daily, many states are actually getting more ambitious because, as you know, the rural people often kind of express angst that they are being discriminated against as compared to their urban brethren, and that the standards, the quantity in urban areas is much higher. So many states are actually doing 70 or 100, etc., liters per capita daily. Now, with that much of water needed for just the Jal Jeevan Mission, there is clearly a huge amount of extraction taking place. Most of our schemes, out of about 6 lakh schemes, about 5 lakh are groundwater based. Of course, surface water based schemes cater to a larger number, but certainly over 2/3 of our rural households are receiving groundwater based water supply and will as we go forward and complete these schemes. There's also in the hill states, etc., spring based schemes and so on. And therefore, the concern that it should not be that we put in place a huge amount of infrastructure and then run short of water. So we do need to start looking at the sustainability of water for the rural population, even as we step up the efforts to provide infrastructure and to take forward the operation and maintenance of these schemes as well. In all of Jal Jeevan Mission, there's a huge emphasis on community participation, community ownership, and control. And so, on this also, while we hope that you are engaging closely with the district collectors and with their officers at the district level across various departments, I hope that you're also keeping in mind that the Gram Panchayats, the Pani Samitis, and other community-based organizations must be also part of this effort. So when you go to the field, when you go to your districts, please keep that also in view. Since we've already talked a lot about the Jal Jeevan Mission, I will just add here that under Mission Life, which you know is something which India is promoting hugely as a way of setting an example to the world on how sustainable, responsible,
human behavior can help in a better future on so many things. Water is obviously a very important aspect of that. One of the things that we need to, so for instance, see is that there should not be wastage, at least obvious wastage of water in terms of leakages, in terms of overflows, etc., which are not being controlled quickly. So I would request you, when you go on ground or when you talk to your collectors, we have asked them to look at the leakage issue also very carefully. So let's also give that some of our attention, that we have to see what are the potential or evident wastage of water points, and how can those be addressed, both as immediate solutions, but more importantly, when people of your seniority and understanding go to the ground, how can you help people understand what are the systemic ways of stopping this? One of the things again is to have the communities engaged. So if they take ownership for the operation and maintenance, for example, then if they are aware that there could be constraints on availability of water, they may fix a leaking pipe more quickly. It's also important to make sure that they have the wherewithal for that. So there are training courses that we are encouraging all states to make sure that in every village there are preferably two trained people who can take care of these plumbing, etc. Matters. So that's another aspect if you have the time. We are also started Sujalam 3 for grey water management. So as you know, one of the ways of recharging the groundwater safely is if the wastewater can be properly utilized for the recharge. I don't really want to take up too much of your time, but I just want to reiterate something I said the last time as well. You're going to the field, you're talking to the districts, the states, and looking at water-related issues is a huge opportunity for us. I hope you will keep coming back to us. I'd personally love to hear from you, so would Vikas and others, on what your experience has been. What is the good which can be replicated? What are the issues that we need to perhaps at policy level take note of, or what are the operational aspects coming to your attention where we could again work with the states and try and settle those issues in a more organized manner. So I hope that you will come back, each one of you, with your thoughts, with your, there's obviously a formal system, there's a portal, you will be putting up your reports and so on. But wherever something strikes you as unique, uniquely good, or a problem that could be worthy of focused attention, please do get back to us. Thank you very much for joining us today. Thank you so much, ma'am. Request the joint secretaries to come in front, please. Richa, Nitin, and everybody else. The reserved seats have been unreserved now, because Mantri ji also will be joining shortly. थैंक यू सो मच मैम। और मित्रों, जब हम लोग जल की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जल जितना सौम्य कुछ भी नहीं होता। जब हम उसे छूते हैं तो शायद एहसास भी नहीं हो पाता है हमें। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतना सौम्य होने के बावजूद जब जल की बूंदें लगातार एक पत्थर पर पड़ती रहती हैं तो वो उसमें भी छेद कर देती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोग भी किसी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें तो उस लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता। और आप जैसे बुद्धिजीवी, और मैं कह सकती हूँ सभी लोग, जब मिलकर इस तरह के किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकता है। और हमारे लिए बहुत ये गर्व की अनुभूति है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम लोग निकल पड़ते हैं तो हमारे पथ प्रदर्शक हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री विश्वेश्वर टूडू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति एंड ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज ऑलवेज बीन देयर for
giving us that motivation to attain this theme. So, my dear friends, please put your hands together for Shri Vishweshwar Tudu. The officers on the dais, head of the dais, and media persons, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का जो वर्कशॉप कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। हम सबको मालूम है जल ही जीवन, जल बिना हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि पीने के लिए पानी हो, खेत के लिए पानी हो, इंडस्ट्री के लिए हो, पावर जनरेशन के लिए हो, कोई भी, आप सुबह से लेकर सोने तक मानव जीवन, सिर्फ मानव जीवन नहीं, पशु संपद जितने भी है, बाकी सबके लिए पानी का बहुत जरूरी है। और ये जब देखा जाता है कि बारिश का दिन में पानी सीधे सीधे समुद्र से चला जाता है, नदी से, तो ये पानी को जब हम स्टोर नहीं करेंगे, आज जो देखा जाता है स्कार्सिटी, पानी का जो स्कार्सिटी, पहले ग्राउंड वाटर का डेप्थ जितना था, वो भी धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमने पूरा देखा है कि पानी का जो यूटिलाइजेशन हम प्रॉपरली नहीं करते हैं, बहुत वेस्ट भी करते हैं। इसीलिए पानी को कैसे हम संचय करें, स्टोर करें और उसका सदुपयोग करें, ताकि जितने मैंने कहा कि पीने के लिए हो, खेती के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, कुछ भी के लिए, तो हम सफिशिएंट पानी हमको मिल जाएगा। क्योंकि आज जैसे मौसम चेंजेस होता है, मौसम चेंजेस की वजह से भी जो बारिश का भी थोड़ा इधर उधर होता है, कभी कम होता है, कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि एक बूंद भी पानी हम कैसे वेस्ट नहीं करें। ये बहुत सारी उदाहरण है, और ये जो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जैसे हमने ये भी देखा है, ऐसे करके पानी को मतलब हम कैसे पकड़ के रखें, इसका बहुत सारी व्यवस्था है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारत सरकार की तरफ से तो जो जो व्यवस्था है हम सब लोग को मालूम है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं कुछ दिन पहले झारखंड गया था। एक बूंद भी पानी, उनका जो कैंपस है, एक बूंद भी पानी वो वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे सिस्टम करके वो पानी को स्टोर करते हैं। आज धीरे धीरे जहां उनका ट्यूबवेल या बोरवेल में पानी नहीं आता था, वहां ऑटोमेटिकली वो पानी आ रहा है। वो सरकारी संस्था नहीं है, एक सामाजिक अनुष्ठान है। तो इसीलिए ये जो जल शक्ति अभियान, हम सबको मालूम है कैसे पानी को स्टोर करने के लिए बहुत सारी जो व्यवस्था है। मान लीजिए कि चेक डैम का है, अभी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर डिस्ट्रिक्ट में 75, मिनिमम 75 जो तालाब, उसको हम रिनोवेट करें, नहीं तो नया तालाब करें। मिनिमम 75, मोर देन 75, मतलब 100 हो, 200 हो, जितना भी हम कर पाएंगे, ताकि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। जब तक ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि आज पहले जितना भी मैं देख रहा हूं कि नदी में पानी आजकल बहुत नहीं है, बहुत सूखा पड़ जाता है नदी। इसका मतलब हम सबको मालूम है, जैसे कि मैंने कहा कि बारिश का दिन में सीधे सीधे पानी समुद्र चला जाता है। उसको हम स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई इतना व्यवस्था नहीं है, और कुछ स्टेट में है, लेकिन बहुत सारी स्टेट में भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। मैंने गया था बिहार और झारखंड का
एक नदी में सितंबर से पानी नहीं है, पूरा सूखा है, एक नदी पूरा सूखा है। इसका मतलब जितने भी चारों तरफ में जो व्यवस्था है स्टोर करने के लिए, तालाब है छोटा ऐसे लेकर बड़ा तक, उसमें पानी को हम ठीक से स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो जो इलाका में ये व्यवस्था है उस इलाका में पानी का जो डेप्थ ऑफ वाटर वो थोड़ा ऊपर में है, और जो जो एरिया में नहीं है वो ऐसे बहुत नीचे तक जाता है। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है, मैं देश भर में जाके देखता हूँ, बहुत सारी ऐसे जगह है जहां जहां ऐसे पानी का डेप्थ नीचे जाता था, वो ऐसे जो व्यवस्था किया है धीरे 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 ऊपर आता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, आज का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में हम लोग को दिखाया जाएगा कैसे हम लोग उसका ऊपर हम काम करेंगे, ताकि हम लोग जो निर्भर करते हैं भूजल का ऊपर, क्योंकि जितने भी पानी है सरफेस वाटर और जो ग्राउंड वाटर है, ज्यादा ग्राउंड वाटर पर हम लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा जो सरफेस वाटर वहां पानी का भी बहुत कम है और इतना मतलब ये भी नहीं है, मतलब स्वच्छ भी नहीं है। लेकिन इस बार मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, उसमें एक चीज मेरे को देखने को मिला कि वहां कुछ सोर्सेस नहीं है, सिर्फ वहां जो स्प्रिंग है वही सोर्सेस में पानी 3-4 किलोमीटर तक वो पाइप में लाते हैं, उसमें कोई ना मोटर की व्यवस्था है, ना कुछ है, ना फिल्ट्रेशन की व्यवस्था है। इतना पानी, इतना अच्छा पानी आता है और उसको पूरा वो टैंक में लाते हैं और टैंक से फिर पंपिंग करके ऐसे करके वो लोग देते हैं। तो कोई कोई जगह में ऐसा बहुत अच्छा व्यवस्था भी है, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह भी है जहां जो भूजल का ऊपर हम निर्भर करते हैं वो बहुत नीचे है। इसलिए हम लोग जब सीरियसली ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में ऐसे करते हैं कि ये नदी हमारा जीवन रेखा है, लेकिन जीवन रेखा तो बोलते हैं लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह में राज्य सरकार इसमें ध्यान नहीं देते हैं। मैं देखता हूं राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ये काम एक्चुअली आगे नहीं बढ़ता है। और ये समस्या ये लोगों का समस्या है, और लोगों का समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग का दायित्व होता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, आज के ये जो कार्यक्रम हम उसको कैसे प्रैक्टिकली फील्ड में कैसे इसको क्रियान्वयन करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कोऑर्डिनेशन विद बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब तक ये मिलके काम नहीं करेंगे और प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे ये सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देख रहा हूं, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का जितना भी प्रोग्राम जाता है, हाँ ठीक है पेन एंड पेपर में कुछ हम कर देते हैं वो हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली हम लोग को पूरा मैपिंग करना है, कौन कौन सा एरिया में क्या है, उनका पानी का व्यवस्था क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट कितना है, अवेलेबिलिटी कितना है, और यहाँ प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो प्रॉपरली नहीं होगा तो वहाँ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का जो नदी का जो संजयकरण एक्चुअली अभी तक तो सक्सेस नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोग को मालूम है जो किन बितों का हुआ है, बाकी सब नहीं हुआ है। ये भी एक है कि स्टेट का जो सहमति नहीं मिलता ये काम आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को करना है हम लोग को। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, आप लोग सब अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपका बहुत दायित्व है, यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आप चाहे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आज का ये कार्यक्रम को हम ध्यान से देखें और प्रैक्टिकली जो जो जगह हम जाएंगे और विजिट करेंगे और वहाँ को स्टडी करेंगे, ठीक से स्टडी करेंगे, और वहाँ लोकेलिटी जो भी है, लोकेलिटी चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो, पब्लिक हो और कुछ भी हो, उनका जो कोऑपरेशन लेके काम करेंगे निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। और प्रधानमंत्री का जो आग्रह है
जैसे कि 2024 तक हर घर जल हम स्वच्छ पानी हम पहुंचाएंगे और कृषि के लिए भी जितने पानी हम लोग दे पाएंगे वो निश्चित रूप से दे पाएंगे। इसलिए पुनः मेरा आग्रह रहेगा, आप लोग थोड़ा ये कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए और उसको कैसे क्रियान्वयन करेगा सब लोग का सहयोग है। इसी शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। Thank you so much, sir. And now, friends, as we know that this is a workshop come orientation program for all you central nodal officers and technical officers to understand this theme, source sustainability for drinking water. So for the same, we have a joint presentation on the subject for you. And this presentation will be initiated by Shri Vikas Shilji, then it will be taken up by Ms. Archana Vanma, madam. So firstly, I would like to request you would like to initiate. So firstly, I would like to request Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Department of Water Resources, Ministry of Jal Shakti, Ms. Archana Verma, to please take over this. Please put your hands together for her. Thank you, Shilpa. Honorable Tuddu sir, Pankaj sir, Vinny ma'am, Debashri ma'am, Vikas, Amit, Richa, and all the CNOs and media persons. Since we have already made this presentation before you, so I will try and not repeat what I have said earlier, which is going to be a difficult task, but I will go ahead with the presentation. Since we've already formed a WhatsApp group, we have been bombarding you with a lot of our documents. So, ma'am has already said that this year's Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign focuses on source sustainability for drinking water. Now, features of the campaign is already mentioned. Apart from source sustainability, whatever has been happening in the past does not have to be forgotten. And we have the Jal Shapats. Then Mission Amrit Sarovar, I'm not going to specify much because we have specifically asked Amit Kataria, Joint Secretary, RD, to make a presentation on this, but this is something you have to. We've included it in the MIS, and it's from the highest office that we have been communicated that CNOs have to be our warriors for Mission Amrit Sarovar timely completion. Then awareness generation by NYKS. Wherever you'll go, you'll find NYKS is doing a tremendous job on creating awareness for Catch the Rain. So please meet the nodal officers. They all have district program officers. Northeast and hilly states are not to be forgotten, and that's why spring shed development, on which Vikas will speak much, is also a big focus. Then protection of water catchment areas are very, very important, because unless we protect the source, we cannot have a strong building on a weak foundation, as ma'am has already said earlier. And initiatives of IEC activities, because it is a Abhiyan. So as Honorable Prime Minister says that we need IEC, we need community participation, because to make this mission really a people's mission. And there are two new elements which you will have to look at. One is promotion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we are really promoting, and the second, which Vinny ma'am has said, is Mission Life. Mission Life, I'm so thankful so many CNOs have already taken the pledge and tweeted, but it is an initiative of Niti Aayog, Ministry of Environment, Forest, and MyGov, and we have been asked to have at least perhaps 1 million or so pledges before a certain time. And so it's very important that when you go there, please share the link with them and ask them to take the pledge, and see from 20 in the mission live document, from 20 to 34, what are the water conservation measures. Please have a look at it, but I'll tell you some. You should look at if they are growing millets, if they are recharging,
if they are using organic seeds and water efficient techniques like micro irrigation, drip irrigation, and reusing water, especially in urban areas, and little things like reusing kitchen water, bathing with buckets. Of course, when you go to the rural area, that may not be a problem. So these three things, and of course whether the plans have been seeded in the village panchayat, plans have been seeded in GPDP, which is a Ministry of Panchayati Raj initiatives. So that also have a look. So basically you are going as one stop solution for convergence with so many ministries. If you've seen our joint DO letter, you'll see that there's so many action points for all the departments. Now, JSA Jal Shakti Kendra has been overemphasized. This is our game changer. And so please read the advisory which we have circulated, and please report whether it's functional or not. Geotagging, because it will be implementing without a scientific plan is like a headless chicken. So please ensure that the districts where you're going to, since these are the water stressed districts, they have geotag and district scientific water conservation plans. And if they need any help, then Vikas will tell you how that help can be procured. Amrit Sarovar is Amit's domain, but 75 water bodies either rejuvenated or made is the target in each of the district, and it is a time-bound project. And people's participation is the core, and no public fund is to be used for beautification. But you're not going as inquiry people, you're going as facilitators. So hope you remember that role, that we are enablers, facilitators, we are not inquisitionists. And this is the status which he will give you in detail. Joint DO letter, please read. There are certain documents we have asked you to read. One is the 12 DO letters which we have sent. Second is the induction note we've given you on JSA, and the guidance note which Vinnie madam had sent, which we have circulated for you, and all the correspondences that we have given. Now, please ensure that there's a state nodal officer. We are shortly going to make a WhatsApp group of CNOs as SNOs. They are very senior people. They are ACS, principal secretary level officers. So kindly ensure that appropriate, communication is maintained to them. Sometimes when I was principal secretary, I used to get calls from under secretaries कि मैडम आप जरा ये कर दीजिए, which was very humiliating. So please ensure that you talk, you message, your correspondence should be polite, because most of them are additional chief secretary or principal secretary level. So kindly, of course, I don't have to reiterate that dignity should be maintained, and you have to ensure community participation, because Abhiyan means community, and please involve, NYK is already involved, please reach out to them, and women for water is the focus, both Jal Shakti se Nari Shakti, but more so Nari Shakti se Jal Shakti. Please give us a feedback on that, and of course convergence with Mission Life, GPDP and Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now I will hand over to Vikas, and then I'll take you through the portal. Thank you, Archana. Honorable Minister, sir, senior officers on the dais and colleagues of the dais. I'll quickly run through the same slides that we had presented at the time of the briefing a few weeks ago. I'm sure that all the officers have already gone through the various guidance documents, letters, etc. that have been issued. And by this time, you would also have contacted your
counterpart district collectors, and maybe also have planned for your first visit. Just as a refresher and a reminder, the importance of the theme of the campaign, as Winnie ma'am also pointed out, almost 2/3 of our households in the rural areas are dependent on water supply schemes which draw water from groundwater sources. And apart from that, in northeastern states and in Himalayan states, there's a fairly significant dependence on spring based water sources, which are again, unless both the groundwater sources and the spring water sources, unless we take measures to ensure recharge, these are all exhaustible resources. So this is not an infinite supply, and therefore the focus of this year's GSA, we thought will keep on source sustainability for drinking water. In terms of approach, though we have advised the states that efforts should be undertaken in all the districts, we've however identified 150 focus districts. The criteria for selection of the districts was basically a set of 2-3 parameters. We wanted to have a footprint in all states, so almost all states are having at least one district. Most have 5 districts. Secondly, we took history of water tanker use in these districts in the last 3 years, especially during the summer months. So wherever this was found or reported, we included those districts in the first set of the districts from which we finally selected 150, and we then also cross-referenced that list with the data from Central Groundwater Board in terms of how are the groundwater aquifers classified across the country in terms of the districts or blocks being critical, overexploited, etc. So an intersection of all these 3 things led to this list. Most of the officers that are being deployed as CNOs are officers of the same cadre, and therefore you would be familiar with the conditions in your district where you are going to visit. But for those officers who are not belonging to the same cadre, our request will be that please get in touch with the district, seek a brief in terms of what is the context, what is the scale of problem, what are they doing, and plan accordingly while you visit the district to have a ground level feel in terms of how things are, how the plans have been prepared, and is there anything else that can be done to help the district to achieve the desired outputs. We also are emphasizing on community-driven approach, because we believe that this cannot be done in a one-year, one-off campaign. This has to lead to sustained change in behavior and conscious efforts on part of the community that it is for them that it is important to conserve water and make sure that their own pipe water supply schemes do sustain and do not become dysfunctional because of the lack of water going forward. We've also shared the SOPs for assessment of the water harvesting potential, the water demand, the water availability, harvesting potentials, and what kind of works should be taken up. All that was disseminated way back in the month of March. So we believe that the districts would have already gone through that exercise. We have requested the districts to complete the planning by 31st of March. There may have been some time overrun, but we believe that by the time you take your first visit, the planning aspect must have been completed, and if not, you must push the district team that slacking off on the first aspect itself is not acceptable. So please try and understand what is the reason why they have not been able to do it. If there is something that they need in terms of assistance, we are there to provide that. But if everything is available and it's just lack of attention, then perhaps your visit should reinforce that aspect and nudge them to complete it as soon as possible and undertake implementation.
We've also, in order to create some sort of an institutional mechanism for the Jal Shakti Abhiyan and for these efforts over the years, so that it becomes a continued kind of a effort. We've also allowed the states using the JJM funds to deploy Jal Shakti fellows. These are supposed to be on the same lines as PMRDF, which is there in aspirational districts program. So please do take a look whether the JSFs have been designated or deputed, deployed or not. If not, what is being done? By when are they going to be deployed? For this, you may have to discuss with the state level PHED secretary or the mission director of the Jal Jeevan mission, because they are charged with this responsibility. In the meanwhile, we've also suggested, we do understand it takes time to recruit people, but we've suggested that there are program management units of JJM in all the districts. So a suitable person in that program management unit must be designated as a JSF, as till such time as a JSF is not made available by the state, or depending on how the arrangements are, if the states authorize district collectors to engage, that's also fine. But please do take a look whether that is being put in place or not. We recommend time-bound implementation. I'll share again the timelines going forward in the presentation. We've identified a few minimal KPIs in terms of identification of water-stressed sources, identification of recharge structures, and in tracking in terms of whether the recharge structures have been developed. One more indicator in terms of whether the source protection work has been undertaken or not. Next. So these are the 4-5 things that we are suggesting that should be done for making a meaningful impact in terms of source sustainability for drinking water. We have requested the states and the districts that all the pipe water supply drinking water sources, regardless of whether these are groundwater sources, spring sources, or surface water sources, should be geotagged in the information management system of Jal Jeevan Mission. There's a Har Ghar Jal app available for doing so. There are field engineers which are users of that app. So when you visit, please do take a look whether how far they have completed this task. If not, is it because they're not aware that they have to do it, or is it because there is something wrong or there's some problem in the app or something like that? Please let us know, and so that we can take suitable corrective action. Then we have asked them that assess not all sources may need recharge work. There might be areas where groundwater table may be very, very good, and therefore to prepare, though of course for the long run it's always recommended that there should be recharge structures, but then to begin with, at least the water stressed areas where we have the history of tanker use, etc., those areas, at least one recharge structure must be identified for each of the groundwater sources, and that the nature and the type of that recharge structure is something which is technical, and we believe that the PhD engineers are well aware about what needs to be done. We've also issued the SOPs. There is a national master plan for groundwater recharge prepared by the Central Groundwater Board, which is also available on our website. We have a reference to that master plan in the SOPs that we have issued and provided to the districts. The master plan provides various kinds of structures that need to be built, what can be done in whatever context that is there. But of course, local wisdom will guide according to the local context. So please do take a look if there is awareness about what is the right thing to do. And if there are constraints there, please let us know so that we can build those capacities. We have said that the works should preferably be completed before monsoon, so that we leverage on the forthcoming monsoon season, the rainfall, to the maximum possible extent. Source protection is something that we have said must be undertaken. So for every groundwater source, especially, and spring source, every year there should, pre-monsoon and post-monsoon, there should be 2 surveys conducted to assess whether there is waterlogging, whether there is any waste disposal in the vicinity of the source,
So within 50 meters of the source, there are certain do's, there are certain don'ts, which are clearly spelled out in the SOPs and the guidance note that we have issued. We have suggested that the survey should be undertaken for all the sources, regardless of whether these are stressed or not. This is to ensure that the water doesn't become contaminated with various kinds of contaminants, which may happen because of this kind of waterlogging or waste disposal or unsanitary or animal waste or fecal matter being there, and because of the rainfall it leaches into the groundwater. So the survey work should be done for all groundwater sources and spring sources. This is something that you could also push the district teams to complete. There are small little works required in terms of protection of the source. All that can easily be undertaken under the 15th Finance Commission funds. 30% of the funds are tied to water, and only if there's nothing to be done on the waterfront, these funds can then be used first for sanitation, and then for anything else, not for anything else. So minimum 30% and to 60% of the Finance Commission grants to Gram Panchayats are tied for water and sanitation. So please, all these small little works can always be completed. We don't see any challenge or any problem of resources, etc. It's just a matter of how well it is planned and undertaken. As I said, so under the JJM, we do support direct recharge structures such as injection wells, recharge shafts, which are engineering structures. They can be funded under the Jal Jeevan mission. But other recharge structures such as percolation tanks or check dams or some water conservation work or spring shed development or management, those resources have to be tied up under the convergence with other schemes such as Manrega, 15th Finance Commission, maybe PMKSY, maybe CAMPA, depending on the context and the resources available, even from the District Mineral Development Fund, wherever it is available. Engagement of communities, Pani Samitis, SHGs would need to be, one of the main thrust areas. Next. Okay, so some of the pointers, all the officers which have been deputed as CNOs are all senior officers. Many of you would have undertaken such visits in the previous GSA campaigns also. But this is just by way of a reminder that please do take a look at the various documents that have been issued, the checklist that is there for reporting. The checklist is now digitized. The data entry forms are available at the district level for reporting progress. So when you visit, please, or maybe even before visiting, you could take a look what has the district reported in terms of the various points on the JSA portal. So please familiarize yourself, take a look, and if they have not started reported, ask them to start reporting so that that progress is captured. There will be two visits. The first visit will be before onset of monsoon, so that the planning aspect and the implementation aspect can be guided by you. And the second visit, of course, will be post monsoon to understand what is it that we could achieve and take a feedback about the efforts, identify good practices so that those can be then disseminated and replicated. And one important role for the CNOs, of course, is that there might be things where the districts might get stuck because of some lack of clarity in some guideline, either from the state level or from the national level. Please, you are supposed to be the bridges between the district and the state, district and the center. Please feel free, utilize all your experience, try and provide guidance if you can by way of clarification. But if you think something needs to be clarified either from the state level or from the national level, please do let us know so that we can facilitate solutions or wherever there might be any problems. Sorry. Next. Yeah, so in terms of the timelines, as I said, planning by 31st of March, implementation preferably by 30th of June. We believe onset of monsoon is variable, so there might be leeway available in some areas, maybe up to August also.
especially in South. Uh, but in some places, it might actually be last week of May, and therefore, accordingly, you should plan your visit and generally nudge and encourage the districts to complete as much as they can before onset of monsoon. Then October verification of works, etc. In November, we do intend to hold a special Gram Sabha to both inform the community about the work done, the importance of it, and to then, urge upon the communities to take it forward beyond the campaign period. Some of the key indicators, as I said, we only have 4 or 5 indicators. We tried to keep it minimal, not too many things to be done, just geotagging of sources, identification of recharge structures, completion of those works, and source protection surveys to be done. That's it from my side. I'm sure some of you would have already visited your districts. We look forward to your feedback and suggestions. Thank you so much. Archana, back over to you. Why has it gone back? Where's the presentation? Huh. So all this has already been discussed. I'll skip this. I'll just come to what you have to do pre-monsoon, just for memory, that you see a briefing by the district authorities, do the site visit and inspection, and then debriefing to the district authorities by you. Now, this indicative checklist we have discussed in detail. One is solely based on the geotagging, and the second is solely based on the JSA activities. Now, we have this performer which we have prepared for you, and we have given you yesterday night your login and password. The tab in the portal has gone live, but in case you've not received it, then please contact Shiv Mohan Dikshit, who is the nodal officer for this, and Shravan Pandey, who is the IT in charge for this. We are all on the CNO portal. So what you have to do on this portal is you have to log in first with this login ID. Then you can reset your password. You have to upload your field visit, and to facilitate what we have done is there is a checklist against each tab. We have given you a yes or no answer so that you can, fill it in easily. And Amrit Sarovar has been included in this. And then you can submit your report along with photographs and additionally whatever you want to say. Apart from the performer, you can also edit it in case you change your mind, or you feel that what you've said perhaps was maybe a needed modification. You can do that, and you can also view your report and then submit it. So that is it. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। और जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जो अमृत सरोवर हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे 75 सरोवर आइडेंटिफाई किए गए थे, जिन सरोवर्स का कायाकल्प एवं उनके पुनर्विकास का कार्य जो है किया जा रहा है। लेकिन उन अमृत सरोवर का ये जो पूरा मिशन है, उसे अचीव करने के लिए CNOs और TOs का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। So now I would like to invite on stage the Joint Secretary RE, Ministry of Rural Development, Government of India, Shri Amit Kataria ji, to give his presentation on role of CNOs and TOs in Mission Amrit Sarovar. Please put your hands together for him.
Thank you. So, good morning to all, respected officials on the dais and my dear colleagues. I'll be giving a brief presentation and overview of Mission Amrit Sarovar. I look after Mahatma Gandhi Narega in general, and I'm the mission director of Mission Amrit Sarovar, which is a specific mission taken up with the in convergence mode with whole of government approach, in which various ministries, around 8 ministries, are involved. First of all, I would like to thank the Ministry of Jal Shakti for giving me this opportunity and using, like last year, the CNOs for inspections and involvement in the process of construction of the Amrit Sarovars. I would like to highlight the importance, before starting the presentation, of the last year's visit, in which almost 500 plus reports have come to us, and they gave us very good insight and feedback to improve and give course correction for the initial, because that was the initial starting of the mission of Amrit Sarovar. So these visits were highly important to us, and I think this year also we would be getting a very deep insight, although we are in the final stages of the mission, but your visits and your feedback is highly important to us. Just to give a glimpse of what Mission Amrit Sarovar is, it was launched on 24th April 2022 by Honorable Prime Minister. The target is construction of 75 Amrit Sarovars in each district. The minimum pondage area is to be 1 acre, although in some of the hill states we have relaxed it on their request. The minimum water holding capacity is to be 10,000 cubic meters. The total number, based on the number of districts and 75 per district, comes to about 50,000. So target set is 50,000. There is use of technology at all stages of implementation. I will just briefly give a small some of the use of technology which we have done in this. There is to be a site for flag hoisting on every 15th August and 26th January. This has been strongly insisted in the mission, and the mission period is up to 15th August 2023. So we have a target of 50,000 to be completed by this 15th August. Next slide. So, there are 6 ministries involved, 6 departments, and plus 2 ministries later were involved. We have Ministry of Rural Development, the Department of Rural Development and Land Resources, Ministry of Jal Shakti, all the 2 departments, Ministry of Panchayati Raj, MOEFCC, and later on we have added Road Transport and Railways, which have been constructing their own Amrit Sarovars. And lately we have Ministry of Defence also, which have come up with some Amrit Sarovars on their own. They have constructed some Amrit Sarovars, so we have added them also. BISEG, the Bhaskara Institute, National Institute of Space Application and Geoinformatics, is the technical partner of this mission. The funding is through convergence. The main source of fund is Mahatma Gandhi NREGS and the watershed development components of Ministry of Rural Development. Then we have 15 Finance Commission grants, Har Khet Ko Pani, public contribution, crowdfunding, CSR funding, or any other funding which the state can do from their own resources. So it's convergence, although the most important aspect, most important funding has been coming from Mahatma Gandhi NREGS. For this, the joint advisory by all the participating ministry departments were issued.
Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain platform is specifically used for its amplification and monitoring. There is a common signage and logo and a common IT portal and mobile apps. So we have been used, it's a perfect example of whole of government approach where we have been using all from funds to various parameters from and to IT. It is a all cutting across all the ministries. The Amrit Sarovar portal, which has been developed by BISEG, it is one-stop all monitoring as well as the data sharing platform. You can go through it. It's a very simple platform, and you can drill down up to districts, block, panchayat, and Amrit Sarovars and see their pictures also. So you can check in your district the reportings also and what is the quality of construction through pictures, and also get a general idea of how the Amrit Sarovar is doing in the districts you are going to go. For monitoring, there is a single mobile app which is used by panchayat level officers and also at the level of block and district. There are two major essential elements broadly. One are the technical features of mission of the Amrit Sarovars, and the other are the social aspects. These have been, I will highlight both of them. In your visits, you will be trying trying to monitor and also see whether these features are really implemented in the field level. The first components are the technical ones. We have to see that there is the main area is the pondage area, whether the enough volume of water is stored in that. The minimum capacity is to be 10,000 cubic meters, so that much work has been done or not. Then treatment of catchment area is also to be part of the pondage outside the pondage area, including the plantation and water conservation measures for the catchment area. Then the improvement of drainage channel, including dredging, bank stabilization, encroachment removal, all these features need to be seen. Grey water treatment structures, if required, those are to be constructed. Development of proper inlet and outlet structures. Construction of bunds with proper compaction and maintenance of side slopes, grass stuffing, etc. This has been given in the technical drawings to all the panchayats who are constructing Amrit Sarovars. Then plantation activities around Amrit Sarovar. This is also a very important feature, and a platform for flag hoisting. So all these features need to be there in the Amrit Sarovar which is constructed. If there is any feature lacking, we ask them to do it. The second component are the social activities which are to be done right from pre-construction phase to the end of the construction. These basically involves people's participation. For example, since the pre-construction phase has already gone, but we have seen in that all the foundation stones were to be laid by the freedom fighters, their families, martyrs' families, or Padma Awardee. And if no such citizen is available, then the eldest citizen of the local Gram Panchayat. Then community events are to be held in during the pre-construction or the launching phase, and a board is to be installed, which we have given from here only. During construction, the Gram Panchayat nominates the supervisor, who is basically called the Panchayat level officer, and there are instances of donation and shramdan, benches, etc., or beautification things are to be done through those donations. So this we have been insisting, and also the disposal of silt by Gram Panchayat is to be used either for some project or it is to be distributed evenly among the farmers. So this aspect has also been taken care of. Post construction is very important, which needs to be seen. The flag hoisting at Amrit Sarovar on every 15th August and 26th January is a must, and we have monitored each and every Amrit Sarovar this 26th January that this event happens. And involvement of freedom fighters, martyr families, and Padma Awardee families.
Then plantation of, we have asked for neem, people and bargat mainly, but other local plants can also be done, and this plantation is to be in a commemorative mode. And the last aspect is the formation of user groups. The full involvement of user groups from starting to end is to be done, and these user groups, they will they are not on, they are the people mostly who live on around those Amrit Sarovars and can use the Amrit Sarovar for their livelihood activities. We have done the survey of the completed Amrit Sarovars, and we have found that irrigation and agriculture usage is 68%, fisheries is 98%, water chestnut, all these 5.5%, and also cattle drinking water, duckery, poultry, piggery, etc. 7.5%. So this user groups formation is a must as of now. Otherwise, it won't be considered as a completed project. And some activities, some livelihood activities, is to be connected with these user groups. So broadly, these two aspects, the technical aspects and the social aspects, need to be done for considering the Amrit Sarovar as completed. The progress is very heartening. Total sites identified are more than 1 lakh. Works commenced is 72,000, and Amrit Sarovar completed are 49,690 as of yesterday. Today morning figure, it is 49,850. So I think by evening or tomorrow morning we will be able to complete the 50,000 target. Thank you. We have just studied some impact also. The increase in water holding capacity is around 50 crore cubic meter. We have all these data on our portal. We try to calculate exactly how much the water holding capacity increases. The plantation of around 5 lakh saplings have been done. Carbon sequestration has also happened due to plantation, and we have a study done on this which says it's around 32,377 ton of carbon per year, and groundwater recharge is 22.4 million cubic meters. We will very soon start a detailed study of the complete impact of the whole of Amrit Sarovar after the completion. It has also become a community hub center, and there it is to be the site for national festivals. This year, 26 January was celebrated. Social activities like Swachhta Rally, Jal Shapath, and other water conservation measures are to be taken around this site. School children's activities, and also celebration of religious festivals or other any programs, and this has been happening also, but we are insisting that all these 50,000 Amrit Sarovars need to become a hub of our water conservation activities and also other social activities. Monitoring mechanisms, we have just to give a little brief that it is there are nodal officers at state level, district level, and for each Amrit Sarovar we have panchayat pratinidhi and panchayat level officers. You will like to interact with them. There has been regular interaction of all central, district officials with these field functionaries. Geotagging of assets has been done before, during and after, and their geotag photographs are available on the portal. You can check from them from the portal that whether that without even going, you can verify. And also the photos and videos of most of the these Amrit Sarovars have been uploaded on the portal. These two aspects which I've already highlighted, specific technical provisions to ensure quality of Amrit Sarovars made in the guidelines, such as inlet, outlet, treatment of catchment area, proper bunding and plantation. This needs to be insisted strongly as of now. There might be some good example, also bad also. We have seen that some have really neglected certain aspects of the Amrit Sarovar. So this is where we have to pitch in right now, because we are in the completion phase, and this quality aspect needs to be insisted. And that's why, in fact, we have been added to I'm giving this presentation, because now completion is done.
we have to focus that the final touch and the real quality aspect is there. If it is not there, we have to again start something must be done to improve the quality of the Amrit Sarovar. And second part, which I've already said, user group to be associated with each Sarovar to ensure quality construction also, and also maintenance, and simultaneously having a livelihood impact on the community around these Amrit Sarovars. The checklist for inspection provided to states for quality implementation, or there is a checklist which has been integrated in the portal of CNOs also. So it is already there, but I will also just highlight the checklist also. The role of central nodal officer is very simple as far as Amrit Sarovar goes. Review progress and ensure time-bound completion of mission. It is almost done. I don't think very few districts might be lagging behind, but mostly it is done. To visit some works of Amrit Sarovars during the field visits, and to coordinate with state and district officials for resolving the issues encountered in the district. So this much is to be done, and focus is to be on two aspects: the quality, technical, and the aspects related to user groups. These two are the main focus. I have also listed in the presentation, we'll share the presentation, our checklist, and it is just yes and no, and it is a simple checklist, and we have just said things like whether the function laying was as per the guidelines, 15th August, 26th January flag hoisting happened or not, the disposal of silt, how it was taken, involvement of panchayat pratinidhi, panchayat officer, all these things are there, and the technical aspects are also included: geotagging, inlet, outlet, channels, catchment area identified, and all. So there are only very few, around 28 or 29 points. So this is from my side. Thank you very much. But before ending, I would also like to give one more aspect in a different sense. We have made another app which is called Jaldoot app. I think in your visit it would be very useful. This is from the rural development side only. We are measuring water table of each and every village, and which have wells, open wells. And these are done twice a year. We started last year measurement of these water tables, at least 2 per village. And post monsoon we have the data. Now pre-monsoon, that means May and June, we are measuring the just pre-monsoon data. And after that, after the rains, we will have another measurement of in the month of October. So twice a year we are measuring water table throughout the country in all the 6.5 lakh gram villages. So the purpose of this is our data set regarding water table is very less. I think only 30,000 points are there to measure. But from this app, we are crowdsourcing the water table. So this data may be useful for general planning, and also how our water conservation measures are really doing, whether they are having an impact at the ground level. This was done for MG Narega basically to measure our water related works, whether they are having an impact. But this can be used in general. So I would like to everyone to use their data, although the number the data is not yet, it's only last year's data is there, but this pre-monsoon day, after the pre-monsoon, it would give a very good feedback of whether village level water table is increasing or decreasing. Thank you. थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग मानेंगे कि हम लोगों को जब भी अपने घरों में भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगर कोई भी चीज़ प्रॉपरली सेगमेंटाइज़ करके रखी जाए और सहूलत होती है हमें
उसे ढूँढने में, उसे उठाकर इस्तेमाल करने में, उस चीज़ का यूज़ करने में, उसका उपयोग करने में। तो ऐसे ही जब हम लोग अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश का क्योंकि एक ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, हम सभी लोग मतलब भिन्न-भिन्न प्रांत से हैं, अलग-अलग राज्यों से हैं, लेकिन उन सारे डेटा को जब हम लोग जल की बात करते हैं, उसकी उपयोगिता के लिए एक सही सलीके से रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके डेटा का भी सही इस्तेमाल हो और उस इस्तेमाल का हमारे देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान मिल सके। So that is why our next presentation is on the GIS-based scientific water conservation plan and inventorization of water bodies for Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2023. I request Advisor to Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Sriram Vedere, to please present this in front of us. Let's have a round of applause for him. Where is the Shravan? Give him the. This one? You don't like it? Laser. Which one? All the dignitaries on the dais and senior officers attending today's workshop, a very good morning. All of us are aware that any mission or Abhiyan, when we couple that with the technology, then the productivity would increase multifold. So since the beginning of Jal Shakti Abhiyan in 2019, the covered areas and the objectives and activities are listed there. We have been trying to focus on utilization of technology when we started this Abhiyan in 2019. But the first year, the idea was that the central nodal officers from Government of India would actually make an impact by going to the districts in all parts of the country. I believe first mission was only in few districts, but later on in the next year, we expanded to all districts. So while the central nodal officers started going, then if you look at the 2022, after 21's Abhiyan, we have actually increased the activities and also the approach that we have been adopting in the Jal Shakti Abhiyan. If you look at the activities, they have increased multifold, and even we have added wetlands, spring shed, and lots of other scientific approach. So when we said enumerate the existing water bodies and geotag all the inventories, and also try to develop scientific water conservation plans and rejuvenation of rivulets and lots of other activities you would see there. So we said try to use some technology and some tools which we have exhaustively tried to indicate to all the district magistrates in all the districts in the country. So to begin with, last year, we have asked all DMs to adopt a scientific approach, ridge to valley watershed concept, try to use the GIS-based technologies and remote sensing technologies to the extent possible, and try to converge all the activities of all the line departments of water management at the planning stage itself. Because what happens is, each department, we all know, tries to achieve their targets and goals and later on try to converge. But while planning stage itself, if you converge, then nothing like that. So in the process, we said, try to use the GIS remote sensing tools. And the step one, what we try to explain to them is that try to identify all the existing water bodies and water harvesting structures in your district. And while how you identify and how you inventarize, I'll just show you in the next slides. And then once you identify the existing water bodies, when you plan for the future structures in your districts, then after this enumeration is done, use this inventory also and try to plan where the next set of the structures are necessary. So by trying to use these tools. And what we said was as simple as, try to use Google imageries, because we didn't want them to actually load a lot of, technologies and tools out there which are costly. So we just try to tell them that, use the basic Google imagery software, which any GIS expert is able to do.
we encourage the district magistrates to actually hire a GS expert at district level if they already don't have. And this is the basic simple tool of trying to capture sitting in the GIS lab, like at the district level. So they can take the help of the existing inventories or of all the water bodies from revenue records also, so that it is easy for them to actually navigate straight to the points where they can actually capture this. So when we said capture these things, you could actually capture the submergence area, the capacity, the size of the reservoir or the water body, whatever, and even try to indicate a kind of the wear and tear of the structure also, but not to the extent where you actually visit the field, but definitely something of that you can capture. And then what we indicated to them is, once they capture these inventories in the using the Google imageries, a KMZ layer, what you call is the set of all the data points that they have identified. The GIS expert would submit it to the district authorities, and then the DM would actually send this list to the field for the field engineering department officers to actually do the ground truthing. So this is very important, that you actually verify it in the field, and try to ground truth. For that, we have encouraged them to use the mobile app that, we have actually created a mobile app. And so once when the mobile app is used, the field officers would actually fill in all the particulars, like what is the type of structure, what is the capacity, what is the condition. And then if you really want to renovate the structure, you can also indicate the type of, the kind of renovation that is needed, because they're actually seeing it in the field. And apart from that, there are lots of information that can be captured. And this mobile app is there in Google Play Store. It's called Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain CTR, JSA CTR. And this has capacities to geotag the existing structures, and also the planned structures. As I said, you can plan new structures also, and update the existing inventory also. You have three main features in this app. And then the login ID is the same as the web portal, and all the attributes, if you would see, they are self-explanatory. Basically, the geo parameters like the longitude, latitude, and all those things are automatically captured. That would avoid the numbering if you want to enter them manually. And you would select the type of structure, the department, and all the other parameters which are self-explanatory there, and even include the photograph of the structure. And then once you do that, this is more of planning for a new structure. Earlier, what I have shown is mostly for inventorization of the existing structures. And once this is done, what this makes is like trying to enumerate and inventorize all the structures of all the departments, whether you are working on the recharge side or discharge side. For example, watershed, groundwater department, they work on the recharge side, and PHED and irrigation, they work on the discharge side. So basically you want water, but those people actually regenerate water. So basically you are trying to merge all of these things by using these kinds of tools. So the agriculture, horticulture departments is an indicative example of what kind of structures you would actually inventorize. And similarly, groundwater department, if you see, each department has their own characteristics that are mentioned there, and you can actually indicate the specific characters of the specific departments. For example, here what we are looking at is agriculture, horticulture thing. So basically, open wells, tube wells, farm ponds, strip, sprinkler, horticulture, and whether they are functional, dried, etc. And as far as groundwater department is concerned, the piezometers, the water tables at various quarters of the particular year, all those things can be also measured. And looking at the other departments listed there, including PR, RD, watershed, forest, and water resource department, it could vary anywhere from hand pump
rooftop rainwater harvesting, village ponds, talabs, check dams, anickets, lakes, MITs, etc. And most importantly, PHED, because this year we're focusing on source sustainability and for drinking water. So this is like, mostly the type of structures like hand pump, open well, tube well, and surface water storage as well. The status of the source, whether it is defunct or operational or abandoned, and the drinking water availability and the quality of water also like TDS, chemical, biological, etc. can be recorded. So as I said, we asked, taking all these parameters and try to inventorize. And, obviously, as far as, the inventorization is concerned, we encourage them to actually capture them through the mobile app and transfer it to the JSA portal here. So that is how we wanted the data to be collected into the JSA portal. And after that, the structures that are marked for renovation, they can be done using the various funds and schemes which were already explained by earlier speakers. So that is something which we have asked them. And step two, that was step one. And step two is like once after we have enumerated all the structures, then the GIS expert would actually, there is a lot of drainage maps available free of cost also, like SRTM and Cartosat 2.5 meters are also available. So we ask them to superimpose the existing structures upon these layers, and whatever how many layers you actually overlap overlay against on top of each other, then you would get more refined information. And basically, we actually suggested to the districts that use this layering of these inventories into of the existing structures into your already existing maps or procuring new maps, and then plan for new structures. This is where you plan for various line departments plan their activities. So we wanted them to actually go with this kind of scientific approach. And very quickly, I just want to say that a ridge to valley approach with village level water budgeting is typically what watershed people do and even other line departments do. But as I said, the convergence of all these line departments is very essential, and not only at the planning stage, but while executing, monitoring, and even impact assessment also. And so this is various layers, maps that are available. I mean, most of the states and districts are already working, and we are all aware of, with our experience in the, various departments, the various maps cater to various types like base map, land use, land cover, and all the maps that are listed out there. And so once we actually try to use this, so the expectations from the states and what our observations were, I'll just try to briefly present here. We actually asked the states that please ground truth the data using the mobile app, and mobile app would actually transfer the data to the JSA portal, and the tools to identify the data authenticity also, like you type the numbers. I mean, if you use mobile app, it's auto captured, but if we have seen lots of states and districts are actually entering it manually using the portal. So when you enter the numbers using the portal, so if you don't do degree minutes and seconds, and then the number is like any garbage. So otherwise you have to have longitude, latitude, you have to have this kind of format. So if you don't have the data cleaning tools, then the data is of not high use. So then from our side, we wanted to integrate this the JSA JS portal data with various sources like Bhuvan, where it has the integrated watershed management program used to be there. Now it has been renamed as PMKSY watershed. So all the data, including Manrega's data, is there, and we wanted to integrate that data with the water body census, which has been done by our Ministry of Jal Shakti, with that of the NWIC, which is National Water Informatics Center, which actually would have the nodal agency of our ministry, which would actually be the nodal for all this, and also get the data from the states also. So all this integration is what we planned from our side too. But the observations are, as I said, most of the states are actually using the portal to enter the data, and so please encourage the districts and states to actually use the mobile app that has lots of parameters that can be pre-filled or auto-selected. So in that way, the data would be more appropriate and more authentic. And from on our side,
we got to achieve a lot. It's a continuous process. So basically, we would be trying to integrate all these data streams, and in that way, it would be one stop shop for all the district states, including the national level government of India departments. So now coming to this year's theme focus is source sustainability for drinking water. So apart from what has been already mentioned to you, which is a continuous process which we need to ensure that the districts are doing, apart from that, the further actions that this year which we can do, or which the districts would do and could do, and basically what we can monitor. Typically this is how if you look at a downstream upstream thing. I don't know this is working or not. Yeah, this whole area is called the catchment area of this structure that we see here. So basically when we say catchment area recharge, then this is all the downstream of the this particular tank here we are showing. So if you treat this catchment area correctly, then the groundwater would be percolated, and this tank would have so the catchment area in the upstream of this tank is done in a scientific manner with ridge to valley approach. Then this is your source of water, which is what we are saying the drinking water source. So what we need to understand is that the catchment area of the upstream area of this source needs to be properly done and properly documented and properly geotagged, and then in that way the sustainability of this source would be maintained. So this is what we are trying to say when we say that the source sustainability. So while ensuring source sustainability, two possible ways of sustaining the source. One is there is lots of water harvesting structures available, like I have shown in the map earlier, but in the downstream there is no water source identified. In that case, you need to identify the water source, the source of location districts would do. And then that is always it is water is there because the proper treatment of the catchment is done. The other approach is you already have the source, but the catchment area of that source is not treated properly. So we can encourage the states and districts to actually do that. So these are two aspects of doing the source sustainability. So in that respect, step one, what we need to do is, this is something similar which we have done last year and which I have already shown. You geotag all the sources and all the existing water harvesting structures. Here it could be a state, a district, or a block, or a gram panchayat, or any 10,000 hectare, 5,000 hectare, whatever units the districts have the plants identified. So encourage them to geotag all these things. Once you do that, then mark all the sources and all the water harvesting structures with color codes, whatever, and try to understand the GS expert and the field engineers of various departments would work together on this, and they would identify, like, I have these many water harvesting structures, now I can easily have in the downstream of this a good source which we can develop. Or vice versa, we already have a source, but these many drains in the upstream of this source can be treated, so that would be encouraged. And as I said, so this is how step two. You have a source, you have the catchment. Then depending on source availability, you treat the catchment, and structures from all the various streams, including JJM also. Can be included in this, as Vikas ji already mentioned, that you can plan certain structures based on the checklist they have given in the JJM mission. So basically, wherever those locations qualify under that guidelines, we can always plan that. And the case two is that basically the water harvest structures are already existing, and then identify a source, and that proposing the source is what something which again PhD could do, department could do with the help of other departments in the line. So this is how some pictures which we have done earlier
this is how the catchment area is treated. And, you see lots of MPTs and PTs and all. And once this is, the treatment happens, with a wider area, this is a source in the downstream, which would always be having water, and a sustainable source, which is what the theme of this particular years. So if you see the well capture, in one remote village in Rajasthan, the pre and post, this is also something you could encourage the field officers to do. They can capture the photographs, and not all the photographs, using piezometers and all the, like Katarya ji just mentioned, like the Jal Doot application, where the groundwater levels and all. So basically this is something, a well which is full of water after the catchment area is treated in the upstream. So sustainability of source, just summing up, with respect to the technology, that the with the technological approach, basically what we want is that the augmentation of the source need to be done, and the recharge measures that we take, and basically some impact assessment parameters which you could keep in mind is that how many tube wells and open wells were earlier functioning, and after this work done, how many have actually the defunct and wells have been revived, and how many, this another measure is that a lot of districts use tankers to give in drinking water to the districts, in the districts. So basically reduction in tanker trips is another parameter which you can consider. And these are certain ideas which I'm just mentioning in front of you, last couple of slides. And expectations from nodal officers, this is apart from what the mission director and the earlier speakers have mentioned. When you review the progress, please ensure that the scientific approach using remote sensing and GS technologies are used, and also ensure that the geotagging of all the existing inventory is done. And then preparation of the future plans are also based on the scientific approach, and try to see if their districts have water conservation plans and block level water conservation plans, and if they are tied up together with these kinds of marrying all types of various activities of various line departments in a scientific approach, ridge to valley, and all this GIS RS tools utilization. And of course involvement of GIS experts, we have ensured last year and before year also, you all know. But please try to ensure without a GIS expert, all this task cannot be accomplished by line officers. So we need to ensure that that happened. And utilization of usage of mobile app rather than the portal to actually enter the data, the capturing the data, that should be encouraged. And the ground truthing needs to be done with the mobile app. And of course they say we don't have the network support to upload the data, and all these are all minor things which have been addressed. Once they capture the data, it is saved. Once they arrive into enter into a network area, then all those things can be uploaded on a daily basis. They can set up the app. And of course coming to this year's specific theme, preparation of plans for source sustainability, which we have already seen in the slides. And geotagging, this is where what we can encourage them to do is, once we geotag the source and the water harvesting structures, and we have seen how we can mix and play either way. If you have this, then you need to do this, otherwise. But associating these two together, like for example, if JJM, under JJM mission, if Vinny ji or Vikas ji is doing a review from here, if any district could show that these many water harvesting structures would actually contributing to this source, and this could be something which would be a good parameter that needs to be considered in the checklist for approving those schemes. In that way, this data enumeration can be used properly. And of course, some few ideas like, when you go, if you could participate in the Shramdan, that is from my, experience. If a senior officer would go and try to do some work for 15 minutes, 20 minutes, that would really have a lot of morale boosting in the field. And of course, inspecting the works, discussion with community, media coverage, and one success story from the previous JSA. These were all some things which are already covered. And last slide. See, what we are trying to do is not in isolation. All these isolated steps would actually integrate into a bigger thing, and the bigger picture is here.
The source connectivity and source sustainability, this would have the repairing, repair and renovation of the existing water body structures, helps in drinking water and sanitation, the Jal Jeevan Mission at SBM. Yeah, we all know. But making the invisible visible, that is identifying the groundwater, sources, and lots of wells, traditional wells, lots of lakhs of wells are there in the, private wells as well, apart from the government owned, and making them visible again, bringing, recharging the aquifer would actually bring all those back into live action, and all this, this bottom up approach would actually help with the river basin management. So once the streams become live, like the first order, second order, third order, that would actually become a river, and whatever you call it as a fourth or fifth order, and those rivers would actually contribute, the streams being a tributaries and all the tributaries of a big river, and that helps in the river basin management as well, and the river rejuvenation and pollution abatement also. When if the stream and river becomes live, then the Aviralata would actually help in the Nirmalata of the continuous flow would actually clean the river. So in that way, the pollution abatement also happens. And all, not but not the least, the decision support system, the IT systems, which Kateraji mentioned and other speakers mentioned earlier, various mobile apps, various data portals, and at Government of India level in the Ministry of Jal Shakti, we are working on integrating all of this, and wherever real time GIS, mobile, sensor based digital data, and integrate all the associated systems. Not only within Government of India, but with the states also, is what we are planning to do. And this is an overall picture if we look at it. Thank you so much. Thank you so much, sir. And now is the time for discussion. So maybe please have the cordless mics in the audience. Yes. So dear friends, if you have any questions, any doubts, तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं और मंच पर आसीन हमारे गणमान्यों से किनसे आप सवाल पूछना चाहेंगे उनको डायरेक्ट भी कर दीजिएगा जी May we please have the mic over here in the front row? Sir, we would request you to kindly introduce yourself and then ask the question. Where are you going off? The mic, please. My question, I thought the answer of the year. When the theme is source sustainability for drinking water, we are producing on the sustainability of Indian scheme. So my question is related to the hello. It may happen that I would request you to repeat the question. That will be good for all, sir. Sir. yeah. So my question is related to the source, related to the theme, which is the source of sustainability for drinking water. It may happen that the source may be situated in some other district, neighboring district, not in the district where we are going. And we need to focus on the source sustainability. Which of the district will be handling the sustainability work, related work? That is my question. And since we need to visit that source also to see whether the due work is to be done or what has been done. So that will also require, it may be a case in not all, but in some of the cases. Thank you. So, what we that there's no doubt there might be some instances where even a groundwater source may be outside the district. This could be a village located at the boundary of the district getting water from some other village which falls in some other district. I'm sure that um, so the idea is basically the village in which the source lies is supposed to act. So if the source is in the other district, then the other district is responsible for the source. But if you and our focus here is on groundwater sources and spring-based sources because these are all surface water-based sources have their own, water storage. So,
find a situation like this, I think it will be good to request the DC to call the officers concerning with them in the adjoining district and have a discussion. और आमतौर पर ना जो पीएचईडी की टीम होगी या जो भी रूरल डेवलपमेंट या पीएचईडी वाले जेजेएम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो वो उनका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन नॉर्मली विल कवर द होल स्कीम. सो अगर वहां पे वो एक्सीएन वगैरह हो रहेंगे तो उनके जुरिसडिक्शन में आएगा. सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपको जरूर ले लेना चाहिए, बट आरडी पीएचईडी टीम्स विल प्रोबेबली बी एबल टू हैंडल इट. Yeah, I have a question this side. Yeah, please, ma'am. Good morning. My name is Roli Singh. I'm Additional Secretary in the Ministry of Health. I'm CNO for Jaisalmer, which is a water stress district, and it's also an aspirational district. I've worked with Mr. Verdere when he was working in Rajasthan. And I just have a simple, it's just a suggestion and also a query, because for my own understanding and for everybody else's, what is the actual buy-in by the states? Is it only between the DMs and the CNOs and the ministry here? How are the states involved in this whole process? Because a good buy-in by the state, if you're thinking of having a state nodal officer now, I think it's a little, must be a little late in the day, because I don't know how the earlier JSAs have functioned. And if the state buy-in is there, then a lot of things will fall in place automatically. These inter-district and state kind of issues. So that was just a query, and just for understanding, I would like to know. We are in the 4th year of the Shakti Abhiyan, and every year a state nodal officer is appointed. The states are now well versed with this mechanism, and the central schemes which contribute to the Jal Shakti Abhiyan, the Manrega, Amrit 2 in urban areas, and 15th Finance Commission, these are all being supported through central government devolutions and funds and centrally sponsored schemes. So I don't expect there will be an issue regarding this. But in case any CNO has an issue in contacting the deputy commissioner, you must contact the deputy commissioner before you go. And if you have an issue in that, you can try contacting the state nodal officer. And if there is a problem in that also, then you can contact the National Water Mission, and we will resolve this for you in case such a problem arises. And Pankaj, just to supplement, you and I jointly held a meeting with all the state governments on this. So all the states and UTs, the kind of VC that we had with you all, we had a similar VC with all states. So yeah, the procedure is well set. We had a VC, but before that, Cabinet Secretary had a video conference with all the chief secretaries. And before that, Honorable President launched the Abhiyan. So there is a well set mechanism now. So, anyone else for the question? Or any clarification if you want? Yes, we have a question. Good afternoon. This is Bipin Menton. I'm Development Committee Z, and I've been allotted lay. Small technical question on that Amrit Sarovar. I presume we can already map out rovers in that district, or is a login required for that? Because I think there was a login portal also there. So if you could just clarify that. Just try, and Amit has unfortunately left. So, but I think all of us can try and take a look if it's in public domain. Otherwise, we'll. Hello, sir. Sir, this is Avinendra from MORD. Here, it's a login is available. All the states have given the login of Amrit Sarovar, and they can mark. Can anybody take a look at the portal without a login? Yes, sir. It's in public domain. Yes, it is in public domain. For marking any portal. There is no need for a password. Yes, sir. Thank you, sir. Anyone else, please?
So, may we please have the mic over there, right at your back? Good afternoon, sirs and ma'am. I've been there for this Jal Shakti Abhiyan program for the last year. So, for two districts, actually, a district got split into two. So, I've been to both the districts. So, one doubt which was at the ground level was the funding sources. There were questions about the funding sources which we are not being very clearly able to articulate. And even here, I think it has been touched upon in bits and pieces. So, if we can be very sure about the funding sources, because when we go there, they keep asking us about the funding sources. So, that is one question which we thought we'll have a clarity before we go. Thank you, ma'am. I thought Vikas mentioned that, but just for further clarity, for a JJM work, because we're talking about sustainability of drinking water sources, for a JJM work, a recharge well can be made using JJM funds. So that all the PHED departments know. In fact, in their annual plans for the current year, when we finalized those in March, we told them to specifically make sure that for every groundwater based drinking water source, they must see what is the recharge structure. Does it need any repair or improvement or a new recharge structure? So the funding is from JJM, and under JJM, as you know, there is no dearth of funds. There is absolutely no shortage of funds. If they don't have already a scheme for making that recharge structure, they can do it now, and it is very readily and easily approved. We've already mandated them to work on that. So they can use JJM funds. All states and UTs are sitting even today on significant balances. So funds for a direct recharge structure for a groundwater based JJM source will not be a problem. But for spring based sources and generally spring shed development, etc., the sources are first and foremost and most important Manrega, but also the 15th Finance Commission tied grant for water and sanitation. So 60% of the 15th Finance Commission devolution to rural local bodies has been tied by the 15th Finance Commission for water and sanitation. That tantamounts to about 28,000 crores going every year to all the states and UTs. That money also is lying. There is adequate money available in all states and UTs as we speak. So the FFC funds can be used, Manrega funds can be used, and of course there are other specialized schemes for spring shed development, etc. PMKSY has that, others, those can be used. So this is the funding for actually doing the work. I would like to मेंशन कि हमारे बीच श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी उपस्थित हो चुके हैं, माननीय जल शक्ति मंत्री। तो एक बार आप सभी की करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते हैं हम आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आज का हमारा ये वर्कशॉप कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो पूरा है, इसमें हम लोगों ने सुबह से काफी सारी चीजों पे बात की है, एंड स्पेशली दैट इज रिलेटिंग टू आवर थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जितनी प्रेजेंटेशंस यहाँ पर हुई, आफ्टर दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन राइट नाउ विद द ऑफिसर्स प्रेजेंट हियर। तो कुछ 2-4 सवाल हमने लिए हैं, अगर उसके बाद आप लोगों में से कुछ और भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं, so this forum is all open. The mic is there. You can just raise your hand. Mic will come to you and you can ask the question. Yes, ma'am, please. May we please have the mic here? Ma'am, please introduce yourself and address the question. Good morning, sirs, and good morning, ma'ams, and dear friends. I'm Dr. Radha Peri, scientist in Central Groundwater Board, Guwahati. Ma'am, my question is very simple. जैसे हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर का, तो वी आर ट्राइंग फॉर क्वांटिटी, है ना सर? अभी हम सोच रहे हैं कि वी हैव 75 सरोवर्स, लास्ट टाइम हम लोग ने आइडेंटिफाइड किया था, बट अभी उसका हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वालिटी का क्या हाल है, वेदर द डीओ इज डिग्रेडेड और नॉट। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून, सो वी कैन ट्राई द बेसिक मॉनिटरिंग पैरामीटर्स लाइक डीओ, टीटीएस। हम लोग 2 बार हम लोग मतलब इट इज अ सजेशन कि हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट ऑल्सो। जैसे मान लो हमारे पास पानी है मगर देयर इज लॉट ऑफ कंटामिनेशन, आर्सेनिक एंड ऑल दिस थिंग्स, तो हम लोग उस पानी को पी नहीं सकते। तो रिगार्डिंग इंजेक्शन वेल ऑल्सो, जैसे हम लोग रिचार्ज करेंगे तो उसका कंटामिनेशन हम पहले उसका क्वालिटी देखेंगे
करेंगे, आफ्टर दैट वी कुड ट्राई फॉर इंजेक्शन. अदरवाइज जब आप इंजेक्शन कंटामिनेटेड वाटर करेंगे तो ग्राउंड वाटर विल बी कंटामिनेटेड और वो बहुत डिफिकल्ट होगा उसको ठीक करने के लिए. जस्ट सजेशन मैम. थैंक यू. Any comment from the dais on that? Well, I suppose if it is an existing source which you are trying to improve, normally this question should not come up. But if you are going to create a new source, yes, the quality issue is very much relevant. And once you develop that source, the quality should be tested before the water is taken for drinking purpose. It's a part of our procedure. So breaking up your question into two parts, the quality of drinking water. तो जो पीने के लिए पानी under the Jal Jeevan mission that is to be given, the quality has to be assured. So we talked about 55 liters per capita daily minimum quantity. Quality minimum has to be as per BIS 10,500 standard. So those are laid down. The departments implementing these schemes know about them. There is a network of laboratories. There are over 2,000 laboratories. You might also be interested if you actually go on ground कि आपके जिले में where you have gone where is every district in the country has except for Daman and Diu में अभी बस है. Elsewhere, every state, UT, every district has a water testing laboratory where anyone can come and get their sample tested at a very nominal price. So testing through labs, testing through field testing kits available in every village, 5 women trained in almost all villages, more than 20 lakh people have been trained for test. So drinking water quality is a very serious issue taken very seriously. Jal Jeevan mission mandates that has to be non-negotiable, whether it is chemical contamination or biological contamination, whatever. In terms of the quality in the source itself, now we know that there are certain geogenic chemical contaminations. So if river basins in many parts of the country have arsenic, have fluoride, that's not something which can be removed and taken away. However, it need not impact on drinking water if you do proper treatment and ensure the supply of proper water. Other contaminants, so if an injection well, recharge well, anything else is made, it is under, or even for that matter, a soak pit under grey water management, it is understood that it has to be done properly so that there is a safe recharge. That is crucial. So it's not just putting in whatever surface water runoff which might have any kind of contamination in it. It has to be a safe recharge through proper structures which have been discussed already, and the trained people should be able to take care of that. पानी जो रन ऑफ तो आप रोक वो वैसे भी जमीन में जाने वाला था आपको उसको पंक्चर करके और की सारी लेयर्स को पंक्चर करके पेपर में नहीं डाल दो. But biological contamination अगर उसमें कोई आने वैसे भी रुक जाएगा वो. जितनी देर वो होल्डिंग होगी उसमें सेफ्टी Percolation होगा it's always through the sand. It's clear automatically. और कोई सवाल आप में से? I think now we can move further with the concluding remarks. And for that, I would like to invite Secretary, Department of Water Resources, Ministry of Jal Shakti, Shri Pankaj Kumar, to please address all of us. Let's have a round of welcome claps for him. Dignitaries on the dais and dear friends, जो भी मेजर पॉइंट्स कहने थे प्रेजेंटेशंस में आ चुके हैं. लेट मी जस्ट से कि ये हमारा चौथा जल शक्ति अभियान है. अब तक इसका प्रोसेस काफी रिफाइन हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, और इस साल 150 जिलों में हम CNOs भेज रहे हैं. पूरे कंट्री में इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है विदाउट अफेक्टिंग द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्रीज. सो वी हैव प्रायोरिटाइज्ड एंड यू आर गोइंग फॉर दोज डिस्ट्रिक्ट्स जहां पानी का स्पेशल प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर. सो योर वर्क इज गोइंग टू बी हाईली वैल्यूएबल. और आपको भेजने का तात्पर्य ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी काम कर रही हैं
उनको एक आपसे गाइडेंस मिले, आपकी विजिट से वो और प्रेरित हों और अपना काम और अच्छी तरह से कर पाए। जो जल शक्ति अभियान में इंटरवेंशंस हैं वो प्रेजेंटेशंस में दिखाए गए। ये भी बताया गया कि इस साल एक नई चीज जुड़ी है और वो है सोर्स सस्टेनेबिलिटी। ये आपको विशेष तौर पे देखना है। उसके साथ अमृत सरोवर का जो हमारा कैंपेन पीरियड है वो 15 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो भी टारगेट्स सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जाए और उसमें CNOs जब विजिट करेंगे तो आपका जो समीक्षा होगी वहाँ उससे इस काम में हेल्प मिलेगी। जब आप जाएंगे तो जैसा मैंने कहा प्रायर इंटीमेशन दें डिप्टी कमिश्नर को, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले से भेज दें ताकि मीटिंग प्रोडक्टिव हो। मीटिंग के बाद अपना जो आपका विजिट है उसको ठीक से प्लान कर लें। जैसा वेदरे जी ने बताया, अच्छा होगा कि आप किसी एक्टिविटी में स्वयं भाग ले लें, वो श्रमदान हो, कुछ कहीं चल रहा है काम उसको देखें या वृक्षारोपण में शामिल हो जाएं, तो उससे मनोबल बढ़ेगा डिस्ट्रिक्ट का भी। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और जब आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे तो अभी तक हमने आपको बताया है कि आप डिस्ट्रिक्ट से क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन ये जरूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट में समस्या आ रही है उसको भी यहाँ ट्रांसमिट किया जाए। जैसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बताया जा सकता है कि मनरेगा के फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं या उसमें कोई समस्या है, तो उसको तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ RD में जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन अभी दिया था, अमित कटारिया जी, उनके सामने लाएं या नेशनल वाटर मिशन में मेंशन करें ताकि ये मिनिस्ट्री ऑफ RD के साथ टेकअप किया जा सके। इसी तरह से अर्बन एरिया में अगर कोई इंसाइट है, कोई समस्या है, तो वो महुआ के साथ शेयर करें या NWM को रिपोर्ट करें। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समय पर अगर समस्या का समाधान हो जाए तो टाइम पे ये कार्य पूरे हो सकते हैं। एंड इन द एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड नाउ वी विल हियर फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर, वी विल गेट आवर गाइडेंस फ्रॉम हिम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मित्रों, जल की महत्ता को हम सभी लोग समझते हैं और इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र भी हैं। और हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि जो जल है जब वो बहता है ना, तो वो जल-जल बहता है लेकिन कल-कल कहता है। तो अगर हम लोगों को अपने कल को, अपने भविष्य को बचाना है, तो उस जल की महत्ता को, उसके संरक्षण को आज ही से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि गौरव का एक क्षण है और हम सभी लोग इस चीज़ से बहुत कृतार्थ हैं कि जो हमारा एक नेतृत्व है, वो ऐसा नेतृत्व है जो ना केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी चिंतित है। इसीलिए स्वयं हमारे इस वर्कशॉप और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द पोडियम श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के जो निरंतर वर्ष चलने वाली इस श्रृंखला की चौथी कड़ी के रूप में शीघ्र ही धरातल पर उतरने वाला है। उसकी तैयारी के लिए आयोजित आज इस वर्कशॉप में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, मंच पर उपस्थित विभाग में जल संसाधन विभाग, मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय पंकज कुमार जी, स्पेशल सेक्रेटरी आदरणीय दिव्यश्री जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव आदरणीय विनी महाजन जी, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन आदरणीय विकासशील जी, मंच पर उपस्थित मंत्रालय में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके निरंतर एक सक्रिय सहयोगी के रूप में भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री श्रीराम वेदिरे जी,
आदरणीय अर्चना वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी, मैं सोच रहा था कि जिस संज्ञा दूं तो जो मैं मेघदूत याद कर रहा था, वैसे मुझे लगता है कि इन सब जो लोग ये काम करने CNOs के रूप में जा रहे हैं, ये सब जल दूत हैं और जल चेतना के प्रवाहक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए आप सब लोगों को सौभाग्य से अवसर मिला है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुबह से हम लोगों ने विषयों पर चर्चा की है और मैं देख रहा था आदरणीय अभिनी महाजन जी ने स्टेज सेटिंग किया, टुडू साहब ने इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में अपने विचार आप सबके सामने रखे होंगे। इस वर्ष जो पिछले 3 साल की श्रृंखला में इसे आगे बढ़ाते हुए प्राथमिकता जिस विषय को लेकर के तय की गई है, जल जीवन मिशन के सोर्सेज के स्ट्रेंथनिंग की जो प्राथमिकता दी गई है, उसके विषय में आदरणीय विकासशील जी ने विचार आप सबके सामने रखे होंगे। टेक्निकली हमको किस तरह से जाकर के काम करना है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, इस पर अर्चना जी ने अपनी बातचीत रखी होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री राम जी, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र में काम करने का है, उन्होंने इसके तकनीकी पक्षों के बारे में भी बहुत विस्तार से आप सबको बातचीत की होगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में अमृत सरोवरों की संकल्पना देश के सामने रखी थी। अमृत सरोवरों की संकल्पना को धरातल पर उतरते हुए लगभग अब 1 साल पूरा होने को है और जो लक्ष्य लेकर के हम चले थे कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर ऐसा निर्माण करेंगे, एक बहुत सकारात्मक प्रगति इस दृष्टिकोण से इस दिशा में हुई है। अमृत सरोवरों को हम इस कैच द रेन अभियान के माध्यम से और किस तरह से सशक्त कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से पंचायती राज और विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया जी ने अपनी बातचीत रखी होगी और अभी जब आदरणीय पंकज कुमार जी खड़े हुए थे, तब इन्होंने जो ऐसा सहायता व्यक्त की कि अब सब कुछ बातचीत हो चुकी है, मेरे पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं तो उसके भी एक कदम बाद में आया हूँ। मैं जब प्रश्न सुन रहा था, कुछ प्रश्न जो मैंने देखे आप सब लोग, और ये क्योंकि प्रोग्राम लाइव ट्रांसमिट हो रहा था, तो मैं पिछले प्रोग्राम में जहाँ बैठा था वहां भी मैं कान में लगा करके सुनने की कोशिश कर रहा था कि आप सब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बात करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया और वैसे भी आप सब लोगों को अब भोजन करने जाना होगा, तो मुझे लगता है कि भोजन के और आपके बीच में मुझे बहुत देर तक नहीं खड़े रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रासंगिकता है, समय है, इसलिए मुझे कहा गया है, तो इसलिए मैं आपकी अपेक्षा की पूरी करने के लिए कुछ अपनी तरफ से इस विषय में विचार रखना चाहता हूँ। बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात की होगी कि 2019 में जब आदरणीय मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जल की विषय की महत्ता को समझते हुए विश्व भर में जल को लेकर के आने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए और वैश्विक चुनौती के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चुनौती की और अधिक विशालता, इसको अनुभव करते हुए उन्होंने जल के विषय पे काम करने वाले विभिन्न विभागों को इंटीग्रेट करके और एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री जल शक्ति ऐसा बनाया था। जल शक्ति मंत्रालय बनने के साथ ही उसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहला विषय इतने लंबे समय तक लगभग पिछले 25 वर्षों से वो किसी राज्य या देश के संवैधानिक मुखिया के रूप में काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अपने सुदीर्घ अनुभव के आधार पर उन्होंने कि समाज की सहभागिता और जन आंदोलन बनाए बिना किसी भी बड़ी चुनौती को पराजित नहीं किया जा सकता, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो, यदि समाज अपने कंधों पर उसे पराजित करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर ले, तो वो चुनौती सामने नहीं ठहर सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना ऐसा विचार देश के सामने रखते हुए पहले कदम के रूप में देश के सभी चुने हुए ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधियों को 12 भाषाओं में 2.5 लाख पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को एक पत्र अपनी तरफ से लिखा
और उसमें उन्होंने अपेक्षा की थी कि हर पंचायत में जो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, उस ग्राम सभा के अनुक्रम में एक ग्राम सभा केवल पानी के विषय को लेकर के ही आयोजित की जाए। क्योंकि सामान्यतः ग्राम सभाओं में पंचायत में किस तरह की आवश्यकताएं हैं, क्या डेवलपमेंट होना है, नरेगा के काम में साल भर की प्राथमिकताएं, ईयरली जो है उसका प्रोग्राम बनना है, इन सारे विषयों पर जो है बातचीत होती है। कुछ विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा थी कि केवल और केवल जल संरक्षण के विषय को लेकर के, जल संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण किस तरह से हो सकता है, उन्हें पुनर्जीवित किस तरह से किया जा सकता है, उनका रखरखाव किस तरह से हो सकता है, इस दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए गांव में एक बैठकर ग्राम सभा आयोजित की जाए, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर के न केवल अपने विचार उस पर रखें, अपितु अपने गांव के जल संसाधनों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी गांव ले। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये ग्राम सभाएं आयोजित करने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता और उनको जिस तरह से देश उनके कहे हुए शब्दों को स्वीकार्यता देता है, चाहे वो कोरोना के समय में ताली बजाने को कहें, चाहे थाली बजाने को कहें, चाहे दिया जलाने को ले कहें, चाहे जनता कर्फ्यू लगाने को कहें, वहां से लेकर के और ग्राम सभा आयोजित करने तक, जब कभी भी उन्होंने समाज से, देश से जो अपेक्षा की है, देश ने अक्षर से अपने नेतृत्व पर इस बात पर भरोसा रखते हुए और इस बात का संज्ञान अपने मन में रखते हुए कि जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वो हमारे ही कल्याण के लिए कर रहा है, हम सबके समग्र हित के लिए कर रहा है, इस दृष्टिकोण से देश ने हमेशा उसका अक्षर से पालन किया है। 2.5 लाख पंचायतों से अपेक्षा की थी, मुझे जो आंकड़े उस समय में दिए गए थे, लगभग कुछ पंचायतों को छोड़ करके सब जगह, क्योंकि कई प्रदेशों में, कई क्षेत्रों में पंचायती राज उस समय स्ट्रक्चर्स नहीं थे, उनको छोड़ करके सभी जगह पर ऐसी ग्राम सभाएं आयोजित हुई और एक नवीन उत्साह का संचार देश भर में एक नए थॉट प्रोसेस को सोचने के साथ में हुआ। मित्रों, इससे पहले के समय की कल्पना करें, जो लोग 40-50 साल से पहले की उम्र के हैं और जिनको गांव में रहने का अवसर मिला है या जिनका प्रारंभिक जीवन गांव में गुजरा है, उन लोगों के स्मरण में होगा कि गांव में जल संसाधन के स्रोतों के रखरखाव की नैसर्गिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व गांव के लोगों का होता था। एक सामूहिक संपदा मानते हुए गांव के सभी लोग मिलकर के उसकी चिंता करते थे, उसका रखरखाव करते थे। और जहां जितनी ज्यादा क्रिटिकलिटी थी, जहां पानी का जितना ज्यादा चैलेंज था, वहां उत्तरदायित्व का भाव उतना ही बड़ा था। शायद गंगा नदी के या दोआब के क्षेत्र में वैसी परिस्थितियां नहीं होगी, क्योंकि वहां पानी प्रचुरता के साथ में उपलब्ध था, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मैंने देखा है कि गांव में पूरा गांव पानी के तालाब, जो गांव की कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसकी चिंता पूरा गांव करता था। हर महीने में उसकी सफाई का एक दिन हुआ करता था कि अमावस्या के दिन हम जो है खेतों में काम नहीं करेंगे, सिर्फ जल संसाधनों की रक्षा के लिए काम करेंगे, गौचर के लिए काम करेंगे। साल का एक दिन होता था जिस दिन पूरा गांव मिलकर के उस क्षेत्र में उसकी शुचिता पवित्रता को बनाए रखने के लिए, वहां हरियाली बनी रहे, जो अरण्य है गांव का, उसमें पेड़ लगाने का काम भी करता था। गांव के जो है पुरुषों की जिम्मेदारी अलग थी, महिलाओं की जिम्मेदारी अलग थी, गांव के जो समृद्ध लोग थे उनकी जिम्मेदारी अलग थी। एक सहज भाव से पूरा गांव मिलकर के उस जल संसाधनों की रक्षा, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता, उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए काम करता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जिस तरह से परिवर्तन हुए, उसके कारण से ये व्यवस्थाएं शिथिल होती गई, टूटती गई, और उसका परिणाम, उसका जो परिणाम के कारण से जो चुनौतियां, वो हम सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक बार फिर जन के साथ में, जनमानस के साथ में जोड़ने की शुरुआत की, और उसका दूसरा चरण जो था वो जल शक्ति अभियान था। जब प्रायोगिक तौर पर, केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, देश के 256 ऐसे जिले जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स थे, प्रदेशों में वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, क्योंकि देश को पैन इंडिया प्रोग्राम की तरह करना था, इसलिए देश के सभी प्रदेशों को सम्मिलित किया गया था। और कुछ ऐसे जिले जो हो सकता है कि जो है आंकड़ों के दृष्टिकोण से, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के हिसाब से देखें तो उनको हम वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि पैन इंडिया प्रोग्राम करना था, उस प्रदेश में, उस जिले में सर्वाधिक चुनौती होगी, ऐसा करके उनको चयनित किया गया था। और देश भर में जितने 256 जिले चयनित किए गए थे, उनके भी सभी क्षेत्रों में का प्रयोग किया गया हो, ऐसा नहीं था।
जो इन क्षेत्रों के 2800 से ज्यादा ब्लॉक्स थे, उनमें से केवल 1592 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके वहां उन गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। और पहली बार भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक जो है अधिकारियों को, जॉइंट सेक्रेटरीज और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को, आदरणीय देवाशीष जी उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे और ये पानी के विषय को देखते थे। इन्होंने जब आदेश पारित किए थे और इन्होंने जब सबको कोऑर्डिनेट करना शुरू किया था, तो मेरे कलीग्स जो हैं वो लोग सब मुझे शिकायत करते थे। वो मुझे कहते थे कि तुमने पता नहीं क्या ये पंगा शुरू किया, हमारे 2 जॉइंट सेक्रेटरी उन 2 को तुमने ले लिया और अब कहोगे कि 15 दिन तक वो लोग सब जाएंगे। लेकिन इस विषय की महत्ता इतनी थी। मुझे स्मरण आता है जब पहली बार इस विषय पे बात करने के लिए सीएनओज के साथ में चर्चा हुई थी, मैं देख रहा था। एक कौतूहल का भाव भी था, एक उत्सुकता भी थी और कई जगह मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हम सब लोगों को मिल गया है, जो रूटीन में हमारा काम है उससे हट करके हमें कुछ और काम दे दिया गया है, पहाड़ पे चढ़ने की ड्यूटी दे दी गई है। कुछ लोगों के मन में इस तरह से भाव थे और मैं क्योंकि थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, कुछ लोग देख रहे थे कि शायद ठीक है, अच्छी डिस्ट्रिक्ट मिला वहां जाकर के। कुछ लोगों के साथ में पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर था, कुछ लोगों के तीर्थाटन करने का अवसर भी था। लेकिन समग्र रूप से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और जो सीएनओज गए थे, जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी टेक्निकल ऑफिसर्स के रूप में गए थे, लगभग हर एक टीम में 2 लोग ऐसे थे जो उन जल शक्ति अभियान को लीड करने वाले नोडल ऑफिसर्स के साथ में जो टेक्निकल लोग गए थे, उनसे जब व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जब चर्चाएं हुई और उनके अनुभव और उनके अनुभवों की जो ऊर्जा थी, उसने निश्चित रूप से इस विषय को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हम सबको प्रदान की। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि उस समय में जो जिस तरह से काम हुआ, जो 5 प्रमुख विषय लिए गए थे, अभी सब लोगों ने उसकी चर्चा की होगी कि हमने वाटर कंजर्वेशन की बात की होगी, हमने जो है ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन की बात की होगी, हमने अफॉरेस्टेशन की बात की होगी, हमने जन चेतना के जागरण की बात की होगी, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए लोगों को जागृत करने के बारे में चर्चा की होगी। ये सब विषयों पर चर्चा करने के बाद में जब लोग और उसके कारण से इस पूरे 2 चरण में होने वाले इस पूरे अभियान में, क्योंकि भारत में मानसून 2 हिस्सों में आता है, हम सब जानते हैं, इस पूरे अभियान में जितने लोग गए थे और उसका कुल जो उसकी जितनी जो उत्पादकता को जो क्वांटिफाई किया जा सकता है कि 2,73,74,000 के करीब जो हैं स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए, 44,500 के लगभग नए टैंक्स बनाए गए, बहुत सारे इस विषय में जो कुछ काम हुआ, उन आंकड़ों में के द्वारा क्वांटिफाई किए जाने वाले बिंदुओं के अतिरिक्त और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि वो जो लोग 256 जिलों में गए थे, उन अधिकारियों की प्रेरणा से, उनके परिश्रम से और जो टेक्निकल ऑफिसर्स गए थे, उन्होंने जिस तरह से, जिस गंभीरता से काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम देश में एक नई जल चेतना का सूत्रपात उन 256 जिलों में कर पाए। न केवल उन जिला जो अधिकारी वो गए थे, उनको भी एक थॉट प्रोसेस को, एक उनके थॉट प्रोसेस को एक नया डायमेंशन उसके बाद माध्यम से मिला। अपितु उन 256 जिलों में भी एक स्पंदन उसके कारण से, एक ठहरे हुए पानी में जिस तरह से एक पत्थर फेंक करके स्पंदन क्रिएट किया जाता है, जिस तरह से तरंगे उठाई जाती है, उस तरह की एक स्पंदन जो है उस कार्यक्रम के निमित्त पैदा करने में सफलता मिली। और ये जितने आंकड़े जिनके माध्यम से हम उस जल शक्ति अभियान को के पहले चरण को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त उससे कई कई गुना जो सफलता जो है वो ऐसे जो उत्साह का सृजन जो हुआ, उसको मैं मानता हूं कि उसने इतना बड़ा योगदान किया है। दुर्भाग्य से दूसरे चरण के समय में हम कोरोना के संकट से जूझ रहे थे, इसलिए हम कुछ बड़ा उसमें नहीं कर पाए। लेकिन जब कैच द रेन अभियान शुरू हुआ 2021 में और कैच द रेन की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि पानी की जो बूंद जहां गिरे उसका वहीं संरक्षण करें, क्योंकि हम जानते हैं और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के कारण से, जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी पानी की डिमांड निरंतर बढ़ रही है, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी जिस गति से ग्रो कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे पानी के संकट और बढ़ने वाला है। और क्योंकि हमारे जल के आगम के स्रोत जो हैं, वो केवल और केवल एकमात्र हमारी वर्षा से बरसने वाला जल है, इसलिए हमें एक एक बिंदु को सहेजने के लिए श्रम करना पड़ेगा।
धरातल पर उस पानी को कैसे रोका जा सकता है, और जो देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर, जो हमारी सबसे ज्यादा आपूर्ति की पूर्ति करता है, की आपूर्ति की चिंता करता है, वो हमारा भूगर्भ का जल, उसके पुनर्भरण के लिए, क्योंकि जितना भूगर्भ का जल हम दोहन कर रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं, मुझे बताया जाता है मंत्रालय में कि 25% दुनिया का भूगर्भ जल दोहन जो है हम करते हैं। और ये जो भूगर्भ के जल की संपदा है, ये लाखों लाखों वर्षों से एकत्रित हुई है, तब जाकर के आज हम इस परिस्थिति में है कि हम उसको दोहन करके अपना उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ निरंतर मिले, ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। और इस दृष्टिकोण से इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से इसको देश के 700 जिलों में, सर्वदूर पूरे देश भर में इसको आयोजित करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। कैच द रेन के आंक जो है, जो कि पहले चरण के समय और कैच द रेन के दूसरे चरण के समय पिछली बार इसको और अधिक विस्तार दिया गया। हम स्प्रिंग शेड्स पे किस तरह से काम करें, हम वाटर बॉडीज पे किस तरह से काम करें, इनको और अधिक विस्तार दिया गया। और इस बार क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व का सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम कर रहे हैं, हम देश के 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में, सदैव कदमों के साथ में निरंतर एक मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा हम सब जानते होंगे, अभी आंकड़ों में बताया होगा कि 65% डिपेंडेबिलिटी हमारी भूगर्भ के जल पर। और अगर मैं पेयजल की दृष्टिकोण से बात करूं, ग्रामीण और शहरी पेयजल का, तो हमारी 85% डिपेंडेबिलिटी जो है वो भूगर्भ के जल पर। इसलिए नितांत आवश्यकता है कि जहां इस तरह की चुनौतियां भूगर्भ के जल पर आधारित पेयजल की स्कीम्स की है, और उनमें से एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है कि जहां वो चुनौतियां, वो संकट बढ़ रहा है और हमें सामने दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से दोहन होता रहा, इसी तरह से दोहन होता रहा, और हमने अगर रिचार्ज पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में एक नई चुनौती, एक बहुत बड़ी चुनौती पेयजल को लेकर के खड़ी हो सकती है। और मित्रों, आप सब लोग जो जा रहे हैं, वो इस देश को जल सुरक्षा देने के लिए एक जल चेतना जागृत करने के दूत में जाकर के काम करने का अवसर आपको मिला है। ये सामान्य विषय नहीं है। हमारा देश आजादी के अमृत काल से गुजर रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अनेक लोगों के संघर्ष के बाद, अनेक लोगों के बलिदान के बाद, अनेक लोगों के योगदान के बाद में हमारा देश आजाद हुआ, और आज हम आजादी के 75वें साल में दिन प्रतिदिन प्रगति करते हुए, वर्ष प्रगति करते हुए, एक दशक पर दशक प्रगति करते हुए आज हम इस मुकाम पर आकर के खड़े हुए कि पूरा विश्व जो है अचंभित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है, और निरंतर जिस गति से भारत जो है आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि हम आने वाले 25 साल में दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में जाकर के खड़े होंगे, ये हम सब ने, देश के 135 करोड़ लोगों ने रिजॉल्व किया है। लेकिन उस प्रगति के, उस विकास के, उस बिंदु को, उस शिखर तक पहुंचने के लिए और उसे स्थायित्व देने के लिए जो पहली आवश्यकता है, और वो न होने पर जो सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, वो है हमारी जल की निर्बाध उपलब्धता। और मित्रों, हम सबको एक अवसर मिला है कि इन 150 जिले जहां इस तरह पे चुनौतीपूर्ण चुनौती को समाप्त करने के लिए साहस के साथ में अपना योगदान करना है, वो काम करने का अवसर आप सबको मिला है। तकनीकी विषयों पर बात बहुत सारी की होगी, मैं तकनीकी विषयों में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, देखिए, ये जो अवसर आप सबके सामने आया है, अगले 3 माह 4 माह में जो काम करके डिलीवर करने की एक आपके पास में अवसर है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से इसको देखने का नजरिया हो सकता है, पर मैं चाहूंगा कि आप इस दृष्टिकोण से इसको देखें कि आप भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक कदम एक्स्ट्रा चलने, वॉक ए माइल एक्स्ट्रा या वर्क एन आवर एक्स्ट्रा, वो जो संकल्पना है, उसके साथ में काम करने का आपको सौभाग्य मिला है। हम जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में हमें जाने के लिए निर्देश किया जाए, उस देश की समग्र परिस्थितियों को समझते हुए हम वहां किस तरह से हॉलिस्टिक परिवर्तन कर सकते हैं। जो तकनीकी जिस तरह की आवश्यकता है, जो भारत इतना विशाल देश है, इतना सारे जियो स्पेशियल वेरिएशंस हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक एक राज्य में, एक एक जिले के एक एक ब्लॉक में, और एक एक ब्लॉक में भी शायद कुछ हर गांव की अलग तरह की भौगोलिक जियोजेनिक सिचुएशंस है, अलग अलग तरह का स्ट्राटा है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, और
क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, विभिन्न प्रदेशों ने भी अपने यहाँ अध्ययन करके सब तरह के एक्वीफर्स को मैप किया है, किस तरह की आवश्यकता वहां है। हो सकता है कि शायद आप जिस डोमेन से आते हैं, जिस सब्जेक्ट डोमेन से आते हैं, आपका जो बैकग्राउंड हो, वहां हो सकता है कि शायद आपने उसका अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन उसका अध्ययन किए हुए ऐसे लोग जो जिले में हैं, जो जल शक्ति केंद्र की स्थापना पिछले बार में भारत सरकार के सहयोग से लगभग हर जिले में की गई, उनकी उपादेयता, उपयोगिता बढ़े, उनके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नीचे काम करने वाले लोगों के बीच में आप एक कैटलिस्ट की तरह किस तरह से काम कर सकते हैं, आप एक एनर्जाइजर की तरह कैसे काम कर सकते हैं, एक इग्नाइटर की तरह कैसे काम कर सकते हैं कि आप जाकर के आवश्यक, क्योंकि जिले अधिकारी के रूप में आप में से बहुत सारे लोगों ने काम करने का अवसर मिला होगा, जिले में धरातल पे काम करने का अवसर मिला होगा, उसको उसके ऊपर बहुत सारे काम है, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, बहुत सारे दबाव हैं, लेकिन उन दबावों के बीच में हम इस प्राथमिकता से किस तरह से लोगों को जोड़ें, ये हमारे कौशल पर निर्भर करता है। हम एक दूत के रूप में जाकर के, और दूत के रूप में राम जी की कथा में दूत के रूप में या तो हनुमान गए थे या अंगद गए थे, आप अपना पांव वहां रोक करके अंगद की तरह आएंगे और हनुमान जी की तरह संदेश दे करके आएंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं। आप सबसे सही अभियान हमारा सफल हो, और जिस तरह से हम सब लोग एक एक वर्ष जितने कदम, केवल छोटे छोटे कदमों ने से हर साल हमने बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाई है, पहली बार से दूसरी बार नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरे चरण में, दूसरे से तीसरे चरण में क्वांटम जंप हमने किया है, और इस बार हम उसी परंपरा को कायम रखते हुए और अधिक प्रगति करेंगे। आंकड़ों के साथ साथ में हम जो है, जिनको आंकड़ों से नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसी ऊर्जा का स्फुरन करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। धन्यवाद सर। तो तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की स्वीकृति देती है कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आग्रह है हमारे लिए आदेश है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुनः माननीय मंत्री महोदय के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडवाइजर टेक्निकल नेशनल वाटर मिशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री शिव मोहन दीक्षित जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। सर। Respected dignitaries on the dais, senior officers, CNOs and TOs, and my friends, a very good afternoon to all of you. On behalf of the National Water Mission, I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India. It is our honor to have your presence on this workshop, sir. Sir, your kind words are the source of motivation for us, sir. And I would like to give convey my sincere regards to the Honorable Minister of States for the Tribal Affairs and the Ministry of Jal Shakti, Government of India, for gracing this event with his auspicious presence and enlightening us for his words of wisdom. I convey my sincere thanks to the Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, for addressing the August gathering on this occasion. It has only been possible to organize this workshop successfully because of your guidance, sir. On behalf of the National Water Mission, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, I also express my deepest gratitude to the Secretary of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, for addressing the session in spite of her busy schedule and bringing more cohesiveness amongst the Department of Ministry of Jal Shakti for the Jal Shakti Abhiyan. I would like to convey my warmest thanks to the Special Secretary Ma'am for her guidance in every aspect of this Abhiyan. I would like to convey my sincere thanks to the Additional Secretary and the Mission Director, National Water Mission, and the Additional Secretary and Mission Director of Jal Jeevan Mission for presenting the role of CNOs and the TOs. Ma'am, I cannot thank you enough for all the helps that you have bestowed upon us. Your guidance and advice have been invaluable for all of us for planning our activities for the successful implementation of the Jal Shakti Abhiyan Kaiser in 2023. I would like to express my sincere thanks to the Joint Secretary, Ministry of Rural Development, for highlighting the importance of role of CNOs and TOs in the mission Amrit Sarovar. I am truly grateful to him for delivering this PPT on such a short notice, as it is one of the important components in the GSA CTR 2023. I also express my sincere gratitude to the advisor to the Honorable Minister of Jal Shakti for throwing the light on the scientific GIS-based water conservation plan.
I also convey my deepest appreciation to the CNOs and TOs for sparing their valuable time for attending this important meeting on the JSA CTR 2023 physically, and for the patient listening for all our speakers, presenters, and making this event successful. I will not doing the justice if I will not mention the team working day and night for the success of this workshop. Hence, I would like to convey my sincere thanks to the team working behind the scene for the smooth functioning of this event, including the presentation and videos. In the end, I request all the CNOs and TOs for the proactively participate in this campaign and support the National Water Mission and Ministry of Jal Shakti for the successful implementation of JSACTR campaign for the source sustainability for the drinking water. With this, I humbly close my address. Thank you very much. Jai Hind. Ma'am. थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ, मंचासीन गणमान्यों का धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। शिल्पा भावना को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मीडिया 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 साहब ही तो थैंक यू करने को टाइम को देख करके मीडिया थैंक यू इधर है सर, इधर से है लंच